Okay. So, good afternoon, everybody, and Jai Bhim to everyone. We have joined this program. They spared this time for this program. And on behalf of All India SCST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai, let me introduce myself. My name is Jagesh Sompuar. I am GM Production in ONGC Mumbai, and also I am elected uh, uh, chairman of All India SCST Employees Welfare Association Mumbai branch. We have our team today. Our secretary, Mr. Raghunath Kargavkarji, he's there. Mr. Sunil Deshpande is there. Then Vipul will be joining shortly. So there are our office bearers or executive members who have joined this program. And on behalf of everybody, my team in Mumbai, I welcome you all to this program. And as last two programs were very informative, very insightful, no, as far as reservation policy, constitutional provisions they are concerned. So we once again welcome Dr. Hemant Tirpude ji. Thank you, sir. Tirpude ji, Yes, loud and clear, no? Loud and clear? Yeah? absolutely clear. Yeah, okay. So, viewers, let me share two things before we start this program. We have created YouTube channel. All our past programs, all your past programs, including this one also, because we'll be uploading this program onto our channel. No, so all programs you can watch just by just by writing SEWA SEWA. I'll write down in the chat box so that you can note down SEWA ONGC and Mumbai. SEWA ONGC Mumbai. SEWA is nothing but All India SCST Employees Welfare Association. Is short form. SEWA. ये किस लिए बना हुआ है? सेवा करने के लिए. या so SEWA ONGC Mumbai. This is our YouTube channel. You can see many videos of our past programs, starting from Dr. Sukhdev Thorat, Padma Shri Dr. Sukhdev Thorat's program on role of Dr. Baba Ambedkar in nation building. Then our executive directors, then the Mind Power program, then civil preparation for civil services by Tina Dabi, then Shushti Dhoke. She is a student in Boston University. Then Purvi Somkuar, my daughter, she took three classes, three webinars on Olympiad exams, then the spelling bee exam, English, then also then also abacus. Okay, and there are many more. So you can go through it, and you can share it also. You can like it. You can comment if anything more is required from our side. We would like to organize many more seminars on the topics of importance, right? तो हेमंत साहब के जो है इसके पहले दो सेमिनार वेबिनार हो चुके हैं ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी। और जैसे हेमंत जी ने मुझे टेक्स्ट किया था कि जो आज का जो प्रोग्राम है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जजमेंट्स एंड मिसकंसेप्शंस, ठीक है ना? सो इसमें फॉलोइंग टॉपिक्स विल बी कवर्ड. I'll just read it. Privatization of PSUs and outsourcing, contractualization in public sector. Number two, ways to secure participation of backward classes in private sector. Okay. Then status of reservations in promotion for SC/ST. Supreme Court judgments adversely affecting the application and scope of CPR. CPR means constitutional policy of reservation. ठीक है ना? Then the demand of sub-categorization in SC/ST reservations, the OBC factor and 50% cap on reservations, demand for application of creamy layer in SC/ST. This is also very important. Creamy layer आजकल चल रहा है. The necessity of central legislation on CPR. Okay, so these eight topics will be covering today, and our eminent faculty in the expert in this field, Dr. Hemant Tirpude ji is with us. And before we start program, uh, let me share one or two more important things. No,
these are very important things. Number one is uh, uh, um, uh, under the guidance of भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी, वन ये क्या कहते हैं उसको, सेमिनरी, बुद्धिस्ट सेमिनरी का यहाँ जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोनावाला, मुंबई के पास लोनावाला, या लोनावाला के पास में एक जगह है, वहाँ पे ये करजत करके जगह है, वहाँ पर वो चल रहा है सेमिनरी का प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन का। उसमें जो कोचिंग होगा, ट्रेनिंग होगा मंक्स का, और वो फिर उनको प्रॉपर वे में दिया जाएगा ट्रेनिंग, और वो फिर दमदम का प्रचार प्रसार उसमें करेंगे। तो those who are really interested in contributing in this mission, so they can do so. मैं इसमें उसमें डाल दूंगा चैट बॉक्स में कि उसमें क्या डिटेल्स है, सारा शेयर करूंगा, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, राइट। और कल शाम को बंते जी का वापस एक प्रोग्राम है ऑन एट फोल्ड पाथ, नोबल एट फोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आप लोग उसमें से ज्वाइन करिए, मेरी ये दरख्वास्त आप लोगों से रहेगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे मित्र है जो बीड से है, जो एनटी और विजेएनटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मिस्टर सुधीर भोसले, भोसले जी, आर यू देयर? मिस्टर सुधीर भोसले, सर, आर यू देयर? जय भीम। जय भीम, जय भीम। हाँ, ओपन करा? जय भीम। हा, या केलंय सर. अच्छा, शॉर्ट मध्ये 2 किंवा 3 मिनिटांमध्ये तुम्ही तुमचं सांगाय जरा, हिंदीमध्ये सांगा, ओके? तो काय तुमचं कार्य आहे आणि काय तुम्हाला तुमचं रिक्वायरमेंट आहे, या गो हेड, सांगा. आप सबको सप्रेम जय भीम। तो मेरा मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ कि मेरा नाम है सुधीर भोसले। मैं खुद आदिवासी पारधी समाज में से है। तो पिछले 5-6 साल से मैं आदिवासी पारधी समाज, जिस समाज से मैं पैदा हुआ है, इस समाज की मैं कुछ कर सकूं, इस विचारधारा से, बाबा साहब के विचार से, कि मैं ये जो हमारा पारधी समाज मतलब क्रिमिनल समाज कहा जाता है, एक गुन्हेगारी समाज कहा जाता है। तो उस गुन्हेगारी समाज को शिक्षा के माध्यम से समाज के रूप में एक अच्छा नागरिक बनाना, ये मैंने सोचा। और पिछले 6 साल से इस बच्चे के लिए बीड में एक स्कूल खोला है। इस स्कूल को गवर्नमेंट का कोई मानधन नहीं मिलता। इस बच्चे के लिए मैं हर दिन जो दुकान है, जो शासकीय कार्यालय है, निम शासकीय कार्यालय है, कोई स्कूलो है, उसमें जाके मैं ये बच्चे के लिए कोई मदद इकट्ठा करता हूँ। इस जो मदद इकट्ठा होती है, उस मदद पे इस बच्चे का रहना, खाना और शिक्षा का चल रहा है। तो इस हमारा ये सेवा प्रकल्प में, अनाथालय में दर साल 100 बच्चे, जिसमें बच्चे होते हैं और बॉयज एंड गर्ल दोनों रहते हैं। तो आज इस बच्चे की जो हमारे कुल में एक बड़ी समस्या चल रही है, वो समस्या है पीने के पानी की। हमारा अकाल का जिला परिचित है। तो हमारे स्कूल में क्या है कि पिछले 2 साल से पानी का बड़ी समस्या चल रही है। तो हम हमारे जो नजदीक था पड़ोसी के पास से हम आधा किलोमीटर से पानी ला रहे थे, लेकिन अब उधर से ही पानी मिलना कठिन हो गया है, लेकिन उसको पानी की जरूरत पड़ी। तो मैंने ये सोचा कि पानी के लिए बड़ा खर्चा हो रहा है, तो आप सब लोग ने हमारे ये आदिवासी समीकरण अनाथ सेवा प्रकल्प है कि जो आदिवासी बच्चे, हाँ, जो आदिवासी बच्चे उसकी पढ़ाई के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इसकी तरफ मैं एक आदिवासी समाज का युवक ये काम कर रहा है, इसलिए ये जो गवर्नमेंट है मेरी तरफ से सकारात्मकता नहीं देख नहीं रहा है, तो हमको ये प्रोजेक्ट के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मैं खुद एक आप समाज बांधवों से अपील करके ये बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। तो हमको अब पानी का बड़ा समस्या निर्माण पैदा हुई है। तो मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर हमारे पानी की विनती के लिए जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी भेजा, तो ये बच्चों के लिए पानी का समस्या हल हो सकती है। तो उनका जो खर्च है, बोरिंग का, मोटर का, लाइट केबल पाइप का, पूरा 55,000 तक खर्चा आता है पूरा। तो मैं यही
जो बात है तो सोम कुमार सर से मैंने कही थी, और उन्होंने आज ये बड़ा जो वेबिनार है, वेबिनार में मेरे को आज बोलने का जो मेरे को संधि दी है, तो मैं सोम कुमार सर और आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को हमारा जो आदिवासी समीकरण ये प्रोजेक्ट है कि जिस बच्चा भीख मांग के चोर बनता है, इस बच्चे को मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा है वेरी कि नाइस। जिस हाँ, कि जो चोर बन रहा है उसको बाबा साहब के विचारधारा से एक अच्छा इंसान बनकर एक अधिकारी बनाने का मेरा सपना है। इस सपना पूरा करने के लिए आप सब लोगों ने मुझे साथ दो, यही आपसे विनती कर रहा हूँ। और मेरा जो डिटेल है वो चार्ट बुक में मैं अभी शेयर करता हूँ। बैंक डिटेल है, हमारा एड्रेस है, और जो पूरा डिटेल है वो मैं चार्ट बुक में शेयर कर रहा हूँ। और अपनी ओर से जो कर सकते हैं ये बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो आप लोगों ने ये समस्या हल के लिए करना चाहिए। ऐसे में आप सब मेरे वरिष्ठ बांधवों को मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू सर। यस यस सुधीर जी, सबसे पहले शुरुआत तो मेरे से करता हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट के लिए आपको 2,000 रुपये यहाँ घोषणा करता हूँ मेरे पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, आप अपना शेयर कर दीजिए, थैंक यू अपना सर। बैंक अकाउंट जो है वहाँ शेयर कर दीजिए। तो हमारे जो भी जो हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो थोड़ा सा या दे कैन आल्सो शेयर, ठीक है। और लेट अस होप कि आपका जो पानी की जो समस्या आपके हॉस्टल में, जिसमें एनटी विजयंती जो पारधी समाज है, बाकी जो लोग हैं वो बच्चे हैं वहाँ पर, उनके पानी की समस्या है, तो हम डेफिनेटली इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसको हेल्प करेंगे। आप चिंता मत करिए, वी आर विथ यू। ठीक है सुधीर जी। थैंक यू। हाँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। और कुछ रहेगा तो हमको बताइएगा, राइट? ओके या थैंक यू। ओके थैंक यू। अभी नाउ इट्स टाइम, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में जब हेमंत सर का जब लेक्चर हो जाएगा उसके बाद में आई विल ओपन दी सेशन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, ओके ओके। हेमंत साहब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ देन। या इट्स ओके, फाइन। ओके थैंक यू। क्या आपको ये, am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, okay, fine, fine. So viewers, let us welcome today's faculty, Dr. Hemant Tirpude ji. And as I told, he will be speaking on policy of reservation, constitutional provisions, जो कोर्ट वर्डिक्स हुए हैं, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन आल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। यहाँ से आर एस प्रवीण कुमार जी की टीम वहाँ ज्वाइन हुई है आंध्र प्रदेश से, और बाकी भी लोग हैं, झाबुआ से है हमारे मित्र टूडू जी है, और बाकी और भी लोग हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े जो है वो रीजनल पीएफ कमिश्नर है अपने सोलापुर महाराष्ट्र में अभी फिलहाल। ठीक है, और उन्होंने इस विषय पे ऊपर पूरे भारत में, चाहे वो सेमिनार है, वेबिनार है, वर्कशॉप है, होल डे सेमिनार बोलिए या 3 डे सेमिनार बोलिए, उसके माध्यम से उन्होंने इस पॉलिसी के ऊपर एक लोगों का अवेयरनेस जो जो है वो काफ़ी दिनों से वो कर रहे हैं। और उनके उनके नॉलेज का कई हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और ही इज वेरी थारो इन दिस सब्जेक्ट, नो, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप and prominent faculties in the field of reservations and constitutional provisions. बाकी डिटेल में और ज़्यादा मैं समय इसमें नहीं व्यतीत करना चाहता, तो मैं नाउ आई हैंड ओवर दिस प्रोग्राम टू डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े साहब। या तिरपुड़े साहब, गो अहेड। Jai Bhim to all. Yeah. A very good afternoon to you. As shared by Jagesh ji, we will be discussing the specific topics today. Before our first topic itself is on privatization and contractualization, outsourcing. All of you are from a very
I think it is a Maharatna company, sir. Yes, ONGC is Maharatna. ONGC. Oh yes. We also have Anil Mede, sir, from BPCL, BPCL, yeah. which is recently witnessing the, which have recently witnessed the privatization. Sir, have we heard from Anil Mediji about how the process was actualized in BPCL and what efforts they have made there judicially, administratively to stall the process of privatization? Means that would be a living, that would be a means a very recent example of how the processes are being executed administratively. What are the roles of the unions? How the courts can intervene? On what basis courts have rejected the stands of the unions? Mede sahab, yeah, go ahead. definitely. Yeah. जय त्रिपुरा सर, एक्चुअली बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन का जो ये चल रहा है, ये सितंबर 2019 से चल रहा था। और सबसे पहले जो हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली मतलब वी वर इंटरेस्टेड कि जो रिजर्वेशन है इसको किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के बावजूद भी, तो इसके लिए हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जनवरी में हमने रीट पिटीशन दाखिल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन रिजेक्ट किया कि बोलते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, this is not the right court, that you have to come and you have to go to the lower court first. So that was the first interaction with the court regarding the BPCL privatization matter and the interest of the SC/ST reservation. तो फिर बाद में हमने वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में गए, तो लेकिन यहाँ पे जो है इन मुंबई हाई कोर्ट हमने एक PIL डाला था थ्रू वन मिस्टर फॉर। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसी के साथ में यूनियन की भी मैटर थे फॉर PIL, उनका सब्जेक्ट था कि BPCL डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। और एक रिट वो था पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का, मुद्दा उठाया था कि BPCL का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सो इट शुड गो थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस, बिकॉज BPCL को पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ही बनाया गया था। BPCL को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस ही फॉलो होना चाहिए। तो ये जो तीनों जो एक ही जगह पे रीट कंबाइन किया तो क्या थोड़ा सा उस टाइम पे जो बेटे साहब, आपकी आवाज पूरी नहीं, अच्छे से नहीं आ रही है। आपका माइक का कोई इश्यू है लगता है। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आप थोड़ा सा उसको करीब नजदीक पकड़िए तब शायद आएगा। अभी आ रहा है? अभी ओ यस, गो अहेड, ठीक है। तो अभी हाईकोर्ट ने क्या किया है कि ये जो तीनों रेट थी, तीनों रेट में दो PI थी, एक PI थी और दो रेट थी। तो कोर्ट ने देखा कि ये जो PIL है इसकी डायरेक्शन के ऊपर में है और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए गए। तो मतलब जैसा हम सब जानते हैं कि हाउ द कोर्ट व्यूज द मैटर ऑफ रिजर्वेशन, उन्होंने क्या किया है कि बड़े ही शातिर तरीके से सभी कंबाइन कर दिया। ये सभी मैटर जो है ना, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन यूनियन का और हमारा SC/ST PIL का, सब कंबाइन करके सिर्फ इनको 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 सुना, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन को सुना और हमारे जो दोनों मैटर थे उनको सुना नहीं सुना ऐसे करके का टाइम दिया और मैटर इज नॉट ऑन वेरी, इज नॉट। मेरे साहब एक काम कर सकते हैं क्या, आप ईयरफोन निकाल के वैसा बोल के देखिए, तो आवाज ही बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। निकाल दीजिए बाहर ईयरफोन को। नहीं, नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में। नो नो नो, ईयरफोन निकाल दीजिए और डायरेक्ट इससे बात तो करिए। नहीं नहीं, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। हाँ, दूसरा हेडफोन देखिए।
अभी आना चाहिए था। हाँ, अभी अभी थोड़ा आ रहा है, अभी आ रहा है थोड़ा। आ रहा है अभी। ओह यस, अभी ठीक है। ओके। हाँ। तो क्या हुआ हम्म, कि मुंबई हाई कोर्ट ने बड़े ही शातिर तरीके से हम्म, SC/ST का जो PIL है वो बाकी दो रेट के साथ में कंबाइन किया। बोला कि सिंस द मैटर इज ऑफ BPCL only, so we want to hear the matter combined। हम्म, और क्या किया कि जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का जो ये था, बड़ा लीगल फर्म था, तो उनको सबसे पहले चांस दिया और पूरा उनका ही सुना, और हमारा जो बात जो है सुना ही नहीं, और सुना तो बहुत कम, ऐसा अटेंशन से सुना। और तीनों भी जो सब चीज़ें जो है सब मतलब प्री डिसाइडेड थी, और हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि देयर इज नो मेरिट इन द PIL। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट टू मेडे जी। आप एक काम करिए ना, एक तो माइक चेंज कर लीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट उस पे बोलिए, इंस्ट्रूमेंट पे वो निकाल दीजिए। आपका उसका हेडफोन का इशू लग रहा है। मैं वो अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है आवाज, बढ़िया अच्छा, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। ओ या ठीक है, ठीक है। तो मुझे रिपीट करना है क्या? हाँ, रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी सुनाई दिया नहीं अच्छे से। ओके ओके, हम्म, एक मिनट। हम्म, हाँ, अभी। यस, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट ना। हम्म, तो एक्चुअली मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम्म, क्योंकि अभी ये लाइव एग्जांपल चालू है और वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। हम्म, तो इसके लिए मैं चाहता था कि मैं एक्चुअली काफ़ी डिटेल में बोला हूँ, लेकिन अभी फिर से रिपीट करता हूँ। कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, हाँ कर हाँ। दीजिए। जब गवर्नमेंट ने सितंबर में BPCL प्राइवेटाइजेशन का डिक्लेयर किया, तब से हम लोग जो है इसके इस चिंता में है, और चिंता कर रहे हैं कि अभी जो जो यहाँ पे 6500 जो पोस्ट है SC/ST OBCs की, ये खत्म होने के कगार पे है। क्योंकि क्योंकि देखिए, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि इसके भी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट 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 कीजिए। अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया हूँ। इसमें ये लेटस हैव दिस डिस्कशन ओपन। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, या गो अहेड। हाँ। तो BPCL में जो 6500 जो SC/ST OBCs की जो सीट्स है, जो जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है आउट ऑफ 13,000 में से, कि उसमें से 2,700 SC/ST के लोग हैं हम। तो जब सितंबर में जब ये प्राइवेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ, तो सबसे पहले हमारे सामने ये सीट आ गई कि ये सीट अभी हम खोने वाले हैं। क्यों? उसका एक रीजन ऐसा है कि BPCL की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जिसमें जो 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 मध्य प्रदेश में जो रिफाइनरी है ना, ओमान, भारत ओमान रिफाइनरी है, जिसमें BPCL के 63% शेयर है, और वहाँ पे 760 जी जी, सीट्स है। उसके आवाज बावजूद आवाज बाकी लोग अपना आवाज नहीं है। बाकी लोग जो है ना, अपना माइक जो म्यूट रखिए, ओनली स्पीकर का चालू रहेगा, ठीक है। हाँ, गो अहेड। जगह जी, आवाज आ रहा है आपको? हाँ, अभी आ रही है। हाँ। ठीक है। तो BPCL में जो BORL करके है, जो ये 13,000 एम्प्लॉयज को छोड़ के है, अलग से है, वहाँ पे 760 एम्प्लॉयज है। और 760 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज जो है, जो जो रेफरेंस से लिए गए हैं ओनली। मतलब अगर BPCL का वहाँ पे 63% शेयर होने के बावजूद भी, अगर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि अगर BPCL प्राइवेटाइज होता है, तो ये जो 6,500 जो सीट्स है अभी फिलहाल BPCL की, वो सब जाने वाली है। ये हमारे सामने दिख रहा है। तो इसको इसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी में जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला था कि भाई ये जो है, मतलब आर्टिकल 14, 16, आर्टिकल 21, इसको मिला के ऐसा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बना के डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में उसको बोल दिया कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, द टाइम इज येट टू कम, इट इज प्री मैच्योर,
और आप लोअर कोर्ट में जाइए, ऐसा करके वो सुप्रीम कोर्ट से रीट जो है वो खारिज कर दिया। बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट होने के बाद हमें वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी तक उसको डाला नहीं, लेकिन एक हमारे करीबी दोस्त है, मित्र है, मिस्टर अरुण डोलस, उनको लेके फिर हमने पीआईएल डाला बॉम्बे हाई कोर्ट। तो पीआईएल में हमने काफ़ी अच्छी तरह से मैटर रखा है, काफ़ी अच्छी तरह से उसको ड्राफ्टिंग भी किया है, बहुत सारा रेलेवेंस भी डाला हुआ है। तो वो डाला, उसके साथ में फिर क्या हुआ कि बीपीसीएल की यूनियन ने भी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट करके एक रीट डाला है। और जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक रीट डाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अभी तीनों मैटर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखा कि ये मैटर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डाले हुए हैं और ये डिफरेंटली हर्ड करने चाहिए। तो मुझे हमको ऐसा लगा कि हमारा जो मैटर है, जो पीआईएल का मैटर है एससी एसटी रिजर्वेशन का, इसको कुछ अलग इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कोर्ट ने देखा कि ये मैटर आगे चल के प्राइवेटाइजेशन को गड़बड़ कर सकते हैं, तो उन्होंने सभी मैटर कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद में हमारा मैटर तो हमने दिसंबर में डाला हुआ था पीआईएल का, और जो जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का मैटर उन्होंने जुलाई में डाला था। तो पहले जुलाई वालों को पहला प्रेफरेंस दिया कि आप आर्गुमेंट करिए, और हमको टाइम ही नहीं दिया। और बाद में लास्ट डे में, मतलब जब जब ये 14 तारीख को, नहीं 12 तारीख को जजमेंट आना था, तो 3-4 दिन पहले, एक दिन पहले हमको आधा एक घंटे का टाइमिंग दिया, उसमें आप बोलो क्या आर्गुमेंट करना है, जस्ट फॉर्मेलिटीज करके। तो एस सी का जो रिजर्वेशन का मैटर है, वो कोर्ट ने सीरियसली लिया नहीं। और तीनों भी जो रीट है, तीनों भी, दोनों दो रीट और एक पीआईएल, उसको नो मेरिट करके डिसमिस कर दिया। तो इस तरह का जो मतलब टोटल एटीट्यूड देखने के बाद में ये हमको ये हमारा ये है कि भाई, सबसे पहले तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कोर्ट ही खड़े हो जाते हैं, और ये हमारा लाइव एग्जांपल है। और उन्होंने जजमेंट में लिखा भी कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट और देयर इज नो मेरिट, और ऐसा करके उसको डिसमिस कर दिया है। तो ये अभी तक का हमारा, अभी तक का जर्नी रहा बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अभी हम लोग एसएलपी के प्रिपरेशन में हैं, और एसएलपी का मैटर अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे उसको। ये है। अभी दूसरा क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि जो रिजर्वेशन के साथ साथ में जो हमारे एमएसएमई है, जो एमएसएमई एक्ट के अंडर में जो 4% एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर को जो बिजनेस मिलता है, उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। इट विल बी द करोर्स ऑफ बिजनेस जो अभी मिल रहा है लोगों को, वो भी चला जाएगा। तो अभी मतलब सोच रहे हैं कि अभी उसको किस तरह से कोर्ट के सामने लाया जाए, ताकि कुछ तो मतलब लोगों का जो है एससी एसटी लोगों का कुछ तो ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3.38 लाख करोड़, जिसके ऊपर कितने जीरो है वो गिनती भी नहीं आएंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से कितने लोगों का, स्पेसिफिकली बैकवर्ड लोगों का फायदा हुआ है। और ये ऐसे ही, मतलब विदाउट कंसिडरिंग एनी फैक्टर अबाउट दिस, ये सोशल फैक्टर ध्यान में नहीं रखते हुए कंपनी को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो नुकसान होगा, उसके लिए हम काफ़ी चिंतित हैं। और ये अभी तक का हमारा जर्नी रहा है, लेकिन हम अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाने वाले हैं। ठीक है। ओके सर। एक एक चीज़ जो अनिल सर ने क्लेरिफाई की कि इन द बैटल ऑफ रिजर्वेशंस or the right to claim reservations, it is the judiciary which is the first obstacle. See the irony, we are viewing judiciary, Supreme Court and High Court uh, as a relief mechanism for us from from the wrong things which are done by the legislature as well as executive. But in the case of policy of reservations, it has been observed since independence that in most of the cases, the Supreme Court has taken such a stand which is damaging the interest of the backward classes.
on the issue of reservations. Now, Bombay High Court in the PIL which was filed by BPCL, it plainly said that your reservation is not the fundamental right. Now, if we look at the history of the Supreme Court verdicts, we will see that this equation, this ratio that, or this observation that reservation is not the fundamental right, this comment and observation was made by Supreme Court in only those cases which were related to reservation in promotions and not to reservations in direct recruitment or initial appointments. In such a situation where reservation is not a fundamental right, this observation was taken as a ground to dismiss the petition. When that observation, when that comment was specifically meant in for those cases which pertained to reservations in promotions. So, why I wanted Anil sir to share these things, we should first know that how this problem can be addressed. Means the process, administrative process, the legislative process, the judicial process. Yes, these are the things involved in it. But we should now, I feel the discussion should be how this process of privatization. First, privatization. Second is outsourcing. These are two different things. Only those PSUs, only those undertakings, enterprises, they can be privatized. However, where there are pure government departments, in those government departments, similar effect can be created by outsourcing and contractualization. Like in most of the non-core areas in government departments, we have gone for contractualization. Then we will be hiring your data entry operators, we will be hiring your cleaning staff, your sanitation staff, we will be, means just for the non-core services, non-essential services, we will be hiring the manpower from the contractor, from the outsourcing agents. This usually happens in the government departments. It is happening in all the government departments. In all the government departments, and specifically in railways, this has taken the highest toll. Means like the staff which was used to maintain and clean the platform, now that staff was the erstwhile group C or group D staff of railways who was doing that work. He was a regular worker, that was a regular workforce. He was getting all the protections under the Provident Fund, pension, your gratuity, your social security, your leaves and all those things. However, now the same work is being done by the contractual staff. The effect is one and the same. Whether it be contractualization, outsourcing or outright privatization, the effect is one and the same. The only thing is that privatization cannot be used or cannot be done in government departments, hence they go for outsourcing and contractualization. Now, what steps can be taken, or means this is open for all. Have we seen any strong resistance even from the SC/STs during the last 20 years against this privatization or contractualization? Means have we seen any strong opposition from the core SC/ST, whether the employees organization or the social organizations or the what we call the civil groups, civil right groups, against this privatization or contractualization? Means this is more worrying. In the past 20 years, we cannot recall
a single incident where there was a massive resistance against this thing. This is really worrying for us. Why, why after witnessing from 1993 to 2000 for a decade the damage which is done by this policy, still since 2000 onwards we are not witnessing any massive resistance. I don't know what is the means socio-psychology working in the SC/ST organizations or the social organizations in the masses, like Hemant sir. Hemant sir. sir. Actually, BPCL in case of BPCL, in 1996 or 97, some people, contractor people, they went to the Supreme Court for getting them confirmed in the BPCL, and they got confirmed. It was a very huge number that time. After that, government has taken some route, and they have again approached to the Supreme Court, and they got some stricture from restriction from or a favorable judgment from the Supreme Court for allowing the work to be given on contract. And now, right now in BPCL, even the engineers are on contract also. So there is something, some support is there from some Supreme Court judgment. That is why all out everywhere this privatization of this contractual work is being given, including banks and all. So I don't remember the year when this judgment came, but it has come. And from that time onward, BPCL or for that matter, any oil company, they have not gone for a recruitment of this kind of jobs, except the engineers. Now the engineers also, they have stopped. Okay. Okay, sir. Means maybe the judgment might be related to specific BPCL. It may not be applicable to all the PSUs. If that recruitment or appointment on contract basis was being done by BPCL, that judgment might be applicable only to BPCL. It might No, it was not related to BPCL. After BPCL done the permanent job of those nearly around 1,500 or so people, some interest, somebody has gone into the court. Maybe some other organization or some other industrialist has gone into the court. Maybe from some other PSU somebody has gone, but definitely we have to dig into the detail, because I clearly remember there is a Supreme Court verdict on this. Yes, you can go for giving the job, any job on contract, and from that time onward, that is why the repercussions are there till date. Okay, sir. Right now, even state governments and other central government departments are also going for contractualization of even higher posts. Means what you are saying, the Group A post also there is contractualization adopted for recruiting them, but reservation policy is maintained. Let me give you example of 3 states: Andhra Pradesh, Karnataka, and even Haryana. And for that sake, you take your Indian Railways. We have contractualization there also, but in such posts also, for the recruitment done by contractualization, also reservation policy is maintained by these governments and even railways. So maybe you can, or BPCL or PSUs can give this example, cite this example, that means contractualization can go along with reservation. We need not to bar if government or if PSU has taken the decision to go for contractualization, then it doesn't mean that contractualization would be without reservation. So what is the support that we have to use? We see right now in LPG plants across India, we have recruited or we have given 250 engineers. We have taken 250 engineers on contract. So that is very big number. Now, how to go about it? Just you can guide me. Sir, there is no bar
There is no bar on the recruiting department or PSU to adopt the reservation policy while engaging such contractual manpower. But they will say कि on what Whether- basis you say, what is the basis, मतलब what is the legal basis for that? Sir, that is why I am saying you कि we can cite the examples of all these state government recruitments as well as government recruitments on contractual basis where they are giving and adopting the policy of reservation in their contractual employment. So if other state governments and central government departments can go for contractualization along with reservation policy, PSUs can also go for it. Mm-hmm. Because same is the problem with the banks. One of my friends, na, they are in the bank, IDBI bank, and there are thousands of bank officers. They are on contract, and there is no reservation. Means, So, right. What has happened is we we have assumed that whenever there is contractual appointment, there might not be reservation. It is not like that. Only in the temporary posts, the posts which are temporary in nature, only in those posts the reservation may not apply. However, in all the posts, in all the regular posts, even if they are filled up by contractual basis, reservation will apply. Means we have the brochure of DOPT who has compiled all its directives and instructions, rules, regulations regarding the policy of reservations that can be cited. In that brochure, it is specifically mentioned that in what sort of posts the reservation policy will not apply. And in that brochure, nowhere it is mentioned that reservation will not apply in contractual posts. excellent, excellent, very good information, sir. Very good, very good. Okay, so means if if we have to go for a stable and constitutional policy for introducing or for securing participation in all the public sector undertakings or in for that matter in all the non-government space, we have two ways. Either we can resort to Article 15(4), which says that government can provide or make provision as a special measure for ensuring participation or representation of SC, ST, OBC. Under this article, because as I have in the last webinar made it clear that this Article 15(4), it covers all the areas. The scope and applicability of this Article 15(4) even pervades beyond the government sector, beyond the public services, because no specific area has been mentioned in that Article 15(4). So we can resort to this article. We can, if we want to create a pressure, we should also suggest a very viable and feasible way to do so. So if we want our participation in the non-government sector, we should also means devise and formulate the ways and means as to how government can proceed. So we can show the government that this under Article 15(4), you can, as a special measure, you may give any directives. You may issue any directives. Now, we need to be very clear. We should not go for the word reservation under this Article 15(4). We can say that we want our participation and representation in the private sector under Article 15(4). We don't want your reservation. We may also use n number of affirmative plans. It may be the offer means like some of the private sector companies, they say that okay, we are extending
training programs to the backward classes employees. We are extending some scholarships or some financial assistance to these people. We are providing special training and coaching to the employees of backward classes. If this is the mechanism which is voluntarily adopted by some of the few of the private sectors, it means that element of affirmative action has been there, has started playing in the private sector voluntarily. This I am saying about voluntary. We should also not forget that the core element of reservation has already been made applicable in the private sector. I will repeat, the core element of reservation is already made applicable in the private sector. I will request participants to please give their feedback as to how we are still witnessing the reservation in private sector. Yes, we are enjoying reservation in private sector right now also. Yeah. The policy of reservation, the scheme, the constitutional mechanism of reservation are already made applicable in the private sector. I just want to know in which area. Participants, थोड़ा डिस्कशन में शामिल होइए. महासेन जी, आर यू देयर? देन one of our friends, Mr. Ramray Tudu ji, is in GAIL, General Manager GAIL. Yeah, just बोलिए 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 बोलिए. प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली ये जो टाटा में जो है ना, टाटा में तो करते हैं, दे रिक्रूट द पीपल स्पेसिफिकली फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी, OBC, एंड दे मेंटेन द डेटा आल्सो. वो एक बार डॉक्टर थोरात जी का जो एक राइटअप आया था उसमें था वो डिटेल्स जी. लेकिन बाकी प्राइवेट कंपनीज का मैंने भी एक्चुअली सुना नहीं वैसे, बट नाउ सर बताएंगे अभी एग्जैक्ट. नॉट इन एम्प्लॉयमेंट. हाँ, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो CSR एक्टिविटीज है. There is another private area, there is another private sector where the policy of reservation is being implemented and SC/STs are benefited right now. Okay. Sir, it is the education sector. Education, the private educational institutions, how they are adopting the policy of reservation. What made them adopt the policy of reservation? They do not fall under government. They are not government institutions. They are purely private institutions. Like means, I have completed my graduation from a purely private dental college, Jamanlal Goenka Dental College in Akola, and that through in 1997 I had got admission from government seat, reserved seat. It means we all might have completed our education, higher education in one or other private educational institutions through government seats and through reservation. Now, my question is how the private educational institutions were made to adopt the policy of reservation. Sir, myself, Ramray Tudu from GAIL. Sir. This aspect we are not knowing. Okay. And in contract, there are no such provision. In fact, we are demanding for this provision. Okay. Means what I will do is I will share the. You are talking about contractual employment. Yeah. Okay. I will share the relevant documents regarding which are being adopted by the various state governments as well as Indian Railways, so that can become a basis for the PSUs to adopt. Now we are discussing another point, that the mechanism of reservation
has already been introduced in private sector elsewhere, but in private sector. It is not like the private sector is totally what we call untouched by this constitutional mechanism. No, the policy of reservation has been implemented in the private sector, that is in private educational institutions. So if private educational institutions are made to adopt this constitutional mechanism, the same thing can be applied to the private sector in the employment. Means what I'm trying to say is that we should bring it to the notice of government that you have already accepted and adopted the constitutional mechanism of reservations in the private sector, in the education sector, through Article 15.4, and it is again this Article 15.4 through which you can do similar actions in the employment area. Now it is already in the second webinar also we have made it clear that while demanding for participation in the private employment, in the private sector, we will be amply making it clear that the eligibility criteria for hiring shall not be relaxed or diluted or modified for any of the backward classes. You need not to relax, but you go for participation, and we can suggest government to introduce similar mechanism in the private area. Go ahead. Whether, I just want to know, while hiring the policy, while hiring the manpower, we have seen that Article 15, its core article is prohibition of discrimination. Prohibition of discrimination on the basis of caste, religion, your language, sex, gender, all those things. Now, Anil Mede sir has referred to Sukhdev Thorat sir. Our point is exactly the same, that because you might all be aware that it is Sukhdev Thorat sir's study which has established that there is a discrimination actively working in the private workforce while hiring the workforce in the private sector. I think you might all be aware of that exercise which Thorat sir has done in 2005-6. What he and his team has done is he had collected all the advertisements from the national newspapers which were given by the private houses. Against those advertisements, they have prepared sample applications in three sets. First set was that of forward caste, means the candidate was from forward caste. The second set was from backward caste, and the third set was from minority. And these sample applications, they were sent to all those. Now what was studied is the response. The response given to the application of forward caste candidate, the response given to the applications against the backward caste and minority candidate. That responses were studied and documented by Thorat. So round the year this process was undertaken, and it was documented that against the set of applications where the names of the candidates highlighted their background of belonging to forward caste, they received most responses. Where the other criteria were maintained
same, your eligibility criteria, your education was same, your experience was same. So despite maintaining the educational criteria as well as experience criteria constant, it was maintained constant in all the three sets of applications, but the choice, the preferable choice given by the hirers were those candidates from forward class. Means we can see those that experiment, that data on the website of Indian Institute for Dalit Studies. Sir has came out with his own book by the name Economic Discrimination, blocked by caste. In that thing, we can see these studies. What I am trying to say is that if the element of discrimination has already been established in the hiring of the private companies, we can invoke this thing and ask and suggest to the government that, okay, your Article 15 is meant specifically for prohibiting discrimination. Now your private sector is resorting to discrimination while hiring, and that is the reason why you should make a policy under Article 15 for prohibiting discrimination. Okay, forget, you don't introduce your reservations. Okay, you don't also mention anything about participation. You don't even go for participation of backward classes. You only go for prevention and prohibition of discrimination in hiring at private sector. We are here. This is the this can be our diluted form of demand, where we are not demanding reservation. We are also not demanding participation. We are only demanding you stop this discrimination in hiring. Okay, I just want to know from the office bearers, have we at any point of time made or approached our policy makers or lawmakers for introducing any mechanism for prohibiting discrimination in private sector which is being operated during hiring processes? नहीं. Okay. अच्छा, Ram Rai sir. Dr. Hemant, there are many joint ventures in which ONGC, IOCL, BPCL, GALs, they are all partners. But in those organizations, to my knowledge, there is no provision for reservation. Yeah, we are not right now talking about PSU. We are now discussing about the area beyond the government sector, not the government sector, not the PSUs, the entire private sector. Now, the thing is that Dr. Hemant, these all JVs are treated like private organization only. that is what I'm saying. If we have established on the basis of data, we have established on the basis of statistics that the element of discrimination is being played while hiring in the private sector, not PSU, not PSUs which you are talking about, in the private sector. Now the social organizations or the employees organizations should at least come up with a very plain demand, very what we call vanilla flavor demand, that okay, you simply ensure that there is no discrimination while hiring in the private sector. And as per my knowledge, as per my interactions with the civil rights or the employees organizations, social organizations, we have never put forth before government that you at least introduce this prohibition against discrimination while hiring in the private sector. This can be the beginning. This can be the big beginning.
because now we have hard data, we have hard statistics of discrimination which is being played. If government says that you know what was happening till 2006 or 7, the means before Sukhdev Thorat sir and his team has arrived at his findings, the private sector was totally denying. Private sector was totally denying all the organization, that is your FICCI, your CII, your ASSOCHAM. They were denying the presence or element of discrimination while hiring. They were denying that, okay, no, we are not seeing the caste of the candidate. We are only going for the merit. This was the stand which was taken by all the private entities. Now, when Sukhdev Thorat sir has established with the help of data and statistics, now we are not using that thing. We should use that statistics and data for policy making. We should say that, okay, now when it is established that there is a strong element playing and preventing the entry of backward classes into private sector, at least government should make a policy intervention for prohibiting discrimination. अगर इसकी शुरुआत भी हो जाती है, let us see what is the response of the private sector, how it responds to this thing, and even we can also evaluate the stand taken by the government. Okay, whether they are acknowledging the presence of discrimination in private sector or not. Even we can even government can say this thing. Even government policy makers, in the absence of data, they may say that, okay, you are only means having this what we call notion of victimhood. Now when we can empirically establish the evidence of discrimination in private sector, but sadly we have still not made any categorical demand of prohibition of this discrimination. Agar if we have to go for participation in the private workforce, this will be the entry gate. This can be the entry point. Again, let us not link this with reservations. Let us right now not link with this even what we call representation. Only securing entry. Why I am so much insisting on this thing is that we are forgetting that what class of private entities we are dealing with. It is not the Western countries. It is not the USA. It is not the European countries where we can expect that these entities would be voluntarily coming forward in these areas. Means the Praxis Institute as well as the Oxfam, they have specifically mentioned in 2018 in their report that these private entities, they will be going only for those measures which are being directed at them in the policy way or in the legislation. They will not be responding to the voluntary measures, and that is why right Anil ji has rightly said that it is only Tata Group which is maintaining this database of SC/ST employees and their representation in private sector. We also have one Bajaj Finance where they have shared their data regarding their presence of SC/STs in their industry. Apart from these two, we don't have any other big industrial house coming forward about or revealing the data about representation or participation of backward classes.
So voluntarily expecting these things from the private sector is not at all working. We should go for policy intervention, and my policy intervention, the beginning should be made by adopting a policy of prevention of discrimination in hiring. This is the point which I wanted to make. हेमंत सर, Now, huh, हाँ, एक्चुअली एक डेटा मुझे जस्ट एक इंफॉर्मेशन याद आया है, आपने ही शेयर किया है वो, कि असोचैम इज हैविंग 7,500 एज ए मेंबर। तो उसमें से जो है ओनली 2,500 लोगों ने ही वो एक पॉलिसी जो है वो एंडोर्स किया है फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपने एक पेपर शेयर किया था मुझसे, वो इफ यू कैन शेयर विद द ग्रुप आल्सो। I will share it, sir. I will हाँ, share it. ओके। Right now, I am not having it on my desktop. वो मेरे मोबाइल पे है. नहीं नहीं, I will, आप बोलिए ना, वो आप जस्ट बताइए ग्रुप को कि व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, वो जो है ना, बिकॉज आई थिंक 2000 जब ये मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, तब उन्होंने दे हैव इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, affirmative action policy for SC/STs, or they were about to bring in some certain laws, but then private industry ने intervene किया कि नहीं, we will go voluntarily, and then that matter fizzled out. Otherwise वो उस टाइम पे शायद कुछ एक्ट बनने ही वाला था उसका। If you can correctly guide us, मतलब इतना ही मुझे मालूम है, ज्यादा नहीं। Manmohan Singh, as a Prime Minister, he has taken an initiative to discuss this matter with all the associations, means ASSOCHAM, your FICCI, CII. Out of that, what was done after that discussions? What was done, that a database as to presence of SC/ST employees, means census of private workforce, that was being undertaken. That was undertaken in 2010, and in that census, and it was undertaken by CII, not by any government body, but CII, in all their industries who were their members. That 2010 data, that is the only statistics available with us, which revealed that the participation of SC/STs, even in the states, even in the highly industrialized state, was very negligible as compared to the population. Yes, that statistics we have, that data we have. The only thing is that we were not able to use this data as well as the statistics collected by Thorat sir into a policy initiative. Anil sir, what has happened that the other industry organizations, they refused for any such policy intervention, because the discussion at that time was about reservation itself, introducing reservation itself in the private sector, and that is what which means made the industry captains go away. Means if we don't go for reservations directly in the private sector, then and then we can see something happening. But what happens is that whenever our lawmakers, they utter this word reservations, the industry people, they come up with their very loved argument of merit and efficiency. So that is why instead of reservation, if we now say for like prohibition of discrimination, let at least this thing be translated into policy, prohibition of discrimination. Our second step can be, okay, you say that there is no discrimination in your, then at least you recruit the backward classes who you find eligible. You don't relax any of your criteria. Your hiring criteria, your recruiting criteria, your methodology, you need not to dilute, but you say that at least whatever criteria you have established, you have not found any backward class
professionals suitable. And if this is the thing, we can make such eligible professionals available to them. The point is, even the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and NCBC, it has a provision that when government department says that they have not found any candidate suitable for recruitment, they have to refer the matter to these national commissions, and then national commission can take efforts to find suitable candidate and suggest to the relevant department. This can be done. This can be very well done. Yeah. What has happened is that subsequent to privatization, we had focused only on the PSU, and we all have seen that we are not in a position to stop the process of privatization, the process of disinvestment. I means right now, even I can say that we have accepted this as a natural phenomena subsequent to the 1990s. So if we cannot stop this thing, if we feel that we cannot stop this thing, we can at least ensure the prohibition of discrimination and our entry through any other means. Let us not utter the word reservation if it distances the policymakers, if it distances even the industry captors. Now, this was the Article 15.4, which can be again invoked for making a policy if we have to resort, if we want to gain entry in this private sector. There is another way out, which I have suggested to Anil Medelji. Strictly speaking, we don't have private sector in India. Strictly speaking, we don't have any private sector in India. We are admitting, if we admit that there is a private sector in India, that will be the biggest roadblock for us. How is the current private sector or the current industries cannot be said as completely private? Means I fail to recognize all the current industries as private, but मैं ये कह सकता हूं कि रास्ते पर वो जो चाय बेच रहा है, वो ठेले वाला, वो प्राइवेट है। रास्ते पर जो अपना पोहा बेच रहा है, भुजिया बेच रहा है, वो वेंडर जो है वो प्राइवेट है। बट ऑल दीज इंडस्ट्रीज which we are seeing, all the private companies, these private companies, they are not private. Why I am seeing that chai wala is private, but these companies are not private? Because that chai wala has not taken a single rupee assistance from government. The government has not given any tax exemption to that chai wala. But on the other hand, the government has extended all the subsidies, all the concessions, all the exemptions, all the tax exemptions to these private companies, to these registered companies. They have been given the lands. They have been given the lands at a throwaway prices. So we should stop saying that we are having a private sector in India. No, we are not having a private sector in India. Let us stop saying that thing. At the most, we can say that they are semi-public. They are semi-public. Though they are not private, they are semi-public because there is an element of government concession. There is an element of government subsidies. There is an element of tax exemption which is being extended lawfully
Every year we pass the budget. Every year government passes the budget. Every year we have the Finance Act. And in that Finance Act, all these subsidies, all these tax exemptions, they are being elaborated. So how can we say that these private companies, they are completely and strictly private? No. They are not private entities, they are semi-public entities. So if we can establish, yes, we need to collect data. Here we are here we are deficient. For establishing how the private sector in India is not entirely private, we need to do some research, we need to collect some data, we need to collect some statistics. And these statistics is available with the government itself, because government itself has extended all indirect tax as well as direct tax departments. They have extended these concessions, they have extended these exemptions. If we collect all this data and statistics, and if we establish that this private sector is actually semi-public sector, then we can take recourse to Article 16, and that public employment clause can be invoked. So all this public sector can be translated and transformed into semi-public sector, and Article 16 can be applied. Sir, Sunil here. Sunil. Please. Sir, the same point now I want to make it that recently the Haryana government now has passed a bill to reserve 75% jobs for local in private sectors. So whenever such a demand, whenever government issues a statement, now the reasoning they will generally give that those industry who seeks incentives from the states and tax subsidies, so so this is applicable to them, that 80% or 70%, whatever is the criteria, it is reserved for the locals. So recently Haryana is the example. Exactly. 2000 Maharashtra done same thing. Sunilji, that thing which Haryana government has adopted is like keeping or assigning jobs to the natives. Natives means there we can surely say that we have a living example in the form of educational sector. We can just say that their government, we have government aided educational institutions and we have government unaided educational institutions. If reservations under Article 16 and under Article 15 can be extended. Now I will share you another beautiful thing. Even these private educational institutions which are getting aid from the government, which are getting financial assistance from the government, when they are recruiting, when they are filling up their posts, they are made to adopt the policy of reservations. Now, yes, sir. The same principle applies to the private industries, that if government is extending some sort of assistance to the industries, yes, the government should also have a say in their recruitment, and Article 16(4) should also be made applicable in all those industries which have got any sort of concession, any sort of exemptions from the government, any sort of subsidies in the form of land, in the form of water supply or anything. Whenever and wherever there is something which is given by the government to any industry, their Article 15 and Article 16 should come into play. Just like what is happening in private educational institutions, in aided educational institutions. This is what we can say right now.
We can very categorically and emphatically say right now. Yes, yes, yes. अच्छा, एक एक चीज मुझे ये भी शेयर करनी है कि Hemant sir, I want to ask one question. Hello. Yeah, go ahead. Hemant sir, आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा है कि फंडामेंटल राइट इज नॉट सॉरी क्या फंडामेंटल रिजर्वेशन इज नॉट a fundamental right. Hello. That is what, sir, we are saying. Hello. What we are saying is. Hello. हेलो, आप पहले अपना नहीं रिजर्वेशन नॉट फंडामेंटल राइट. अभी आपका आवाज जरा बीच में मेरे को सुनने को नहीं आया. अशोक जी. हेलो अशोक साहब, आपका आवाज को बीच में सुनने को नहीं आया. आवाज कट हो रहा था. हाँ सर, वही 1 मिनट सर. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि you start your video first, no? Then talk. हेलो अशोक जी. हेलो. नहीं, मेरे को एक. हाँ सर, आप अपना वीडियो पहले ऑन करिए ना. हाँ बोलो सर. आप अपना वीडियो, you start your video first. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो. Maybe हेलो. is not able to hear us, sir. हाँ सर, आ रहे हैं. हाँ, अभी आप दिख रहे हैं अभी. ठीक है, अभी आप बोलिए. हाँ, go ahead. Yeah, go ahead. अशोक जी. हाँ, Yeah, go ahead. चाहिए ऐसा सर का ये था कि मेरे को इतना सुनने को ना, इसके लिए पूछा था. हाँ. कि ये सेमी पब्लिक. आपकी आवाज नहीं आ रही वडगांवकर जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. What sir is trying to say is that. हेलो. हाँ, अभी आ रहा है सर. हाँ, अभी आ रहे हैं. बोलिए. हाँ, बोलिए. Go ahead. अभी आ रहा है सर. Yes. हाँ सर, अभी सर ने बोला ना कि जो सेमी पब्लिक इंस्टीट्यूट है उसमें अपने को रिजर्वेशन है या नहीं है अभी. ये पहला क्वेश्चन है. अगर डिमांड है तो उसका कुछ ऐसा जीआर ऐसा कुछ है क्या. और उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया है, रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ओके. हेलो. हाँ, ठीक है, आगे बोलिए ना. हेलो सर, आ रहा है मेरा आवाज आ रही है. बोलो. Go ahead. फंडामेंटल राइट. हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन कैसा ये हो सकता है सर. ठीक है. हेमंत साहब. हाँ, या ओके. हाँ, ये दोनों डिफरेंस कैसा है सर, इसके लिए मेरे को डिफरेंस. हाँ, ठीक है. ओके, गॉट योर क्वेश्चन. या Sir, in educational institutions which are aided, which are funded, which are finally assisted by the government, in all those institutes, the policy of reservation is made mandatory. Firstly, whether they are state government funded, whether they are central government institutions and funded by central government, whether they come under UGC, or whether they come under state university. So all the educational institutions which are receiving some funds from the state governments or central governments, in all such institutions, the policy of reservation has been made applicable by the respective state governments. In case of central institute, by central government UGC, Ministry of HRD, Human Resource Development. Now, what we are trying to say is that regarding your second point, when Supreme Court has, it is not a decision. Let me make it very clear to you. There is not, this is not a decision. It is an observation. It is an opinion of the court. It is an interpretation of the court that reservation is not a fundamental right, and that too it was observed only in cases where the promotions were challenged.
Because of this anti-reservation stand of Supreme Court, that is why I am suggesting that we should not invoke Article 16. We should invoke the element of discrimination under Article 15 and also seek remedy under Article 15 itself. When Supreme Court is not ready to give you reservation under Article 16 in public employment, in public departments, in public services, in that case, what we are saying is that, okay, now you switch to Article 15, you establish that there is discrimination, and now you say that, okay, when there is discrimination, you protect us. Can Supreme Court say that seeking protection against discrimination is not the fundamental right? We should, when we talk about policy measures and constitutional provisions, we should be very refined so that neither the policy makers nor the courts can strike off our argument. No court can say that your claim to protection against discrimination is not your fundamental right. No court can say that. Yeah. That is why we are advocating this bringing a law for prohibiting discrimination in private sector hiring. Okay, what we were discussing is okay. We were discussing that in remaining, if we want to save remaining PSU, we will have to take this step. You need not to target PSU. You target your entire private sector. Now we are playing in defensive mode. They are disinvesting, they are privatizing the PSU. If we are saving, or if we are taking actions to save the PSUs from being privatized, from being disinvested, that is a defensive stand. That is a defensive action. What I am trying to suggest is, you don't go for limited remaining 15, 20, 25 PSU. You target your entire private sector and you ask something which is more substantial, as per constitution, which is more substantial in the eyes of law, which is more substantial in the opinion of Supreme Court also. And let me assure you, when you align your reservation against the element of discrimination, your claim gets strengthened like anything. Your claim for protection, you are only seeking protection against discrimination. If we take it at higher levels and at the level of policy making, that will definitely stall, that will definitely have some impact on the process of privatization, but a definite impact on the process of privatization. If we go for this bigger thing, this is a bigger thing. About the first 2 points which were, I will be just sharing this thing. We will be discussing the third topic. I don't think there is more need to discuss about PSUs, contractualization, because let us move on that area where we can act.
where Yeah. we can, where we can ourselves be a player, where we can make the policymakers think. So Jagat ji, Yeah. Dr. Saab is now putting us in action Hmm. on a platform of the federation, we should raise this particular topic to the policy makers. Now the time has come, and actually it is already too late for us to take the action. So can we do it fast by taking the input from the doctor, sir? Bilkul. Okay. Yeah, we'll call a meeting of our federation, and Yeah. we'll have discussion on this, and then go. Yeah. This 15-4 kind of thing, actually we have to put it in the proper format, and we have to write to the DIPAM secretary and Ministry of Finance and PMO, whatever the normal course we adopt now. Because this thing we have never brought on paper from our side. Correct. We have to bring it now. Yes. Okay. Sorry, sir. Doctor sir, please go ahead. Yes, and also means regarding that private sector, calling it a private sector means let us question the privacy of the private sector. If we aggressively question that thing, they will definitely be means not only we will be strengthening our claim, they themselves will go in defensive. Yeah. Either the private sector should stop taking all the financial concessions, exemptions, all the subsidies from the government. We can compel them. Either we can compel them to stop doing this thing, or if you continue to avail these things, you should also open your doors to us. Yes. This is a strong bargain. This is a very strong bargain. Okay. Our third topic was status of reservation in promotion. Or should we take the questions which I am seeing in chat? No, we'll go for reservation in promotion. Then we'll open for question answer. Okay. I think so. That will be better. Right now, I have the reservations in promotions are being given only in Group C, Group B, and from Group B to the lowest post in Group A. Yeah. So there is no reservation within Group A post, but up to the lowest post of Group A, there is provision for reservation in promotion, and that too for government departments. Yes. May not be in PSU, in government departments, in state governments also, in central government also. Now, there are two judicial pre-requirements before effecting these promotions. These two prerequisites, which are mandatory for the department, are first, the concerned departments or the concerned government should establish that there is inadequacy of representation of backward classes. So if there is, like in my department, if there is Provident Fund Inspector is a Group B post, and there is also what we call the post of Section Supervisor. Both are Group B post. So this Section Supervisor is a Group C post. If SC/ST employees are required to be promoted from Section Supervisor to Provident Fund Inspector or Enforcement Officer, which we call, so my department has to first establish that, okay, in the cadre of Enforcement Officer, the representation of SC/ST is only this much. The total seats, the total sanctioned post in the cadre of Enforcement Officer is, say, 100. Out of that 100 posts, only 10 posts are represented by SC/ST official, which is inadequate, and that is why the provision for
promotion should be made, and the post either by seniority basis or through direct recruitment from by open competition should be held. If my government, if my department is unable to establish that there is not adequate representation, adequate number of SC/ST officials in the cadre, in that particular cadre, then the courts may struck down the process of promotion. The courts may struck down. This is one precondition, which is very easy for the government departments to establish, because all the government departments have the data of total number of sanctioned posts, total number of posts which are filled, and how many are from SCs, how many are from STs, how many are from OBCs and general category. This data is already there with government department, so it is very easy to establish. But let me give you the example of Maharashtra state government. This exercise means Maharashtra government is refusing to do this, and that is why since 2017, more than 40,000 SC/ST officials are not being promoted. Their promotions are stalled since 2017, because the Bombay High Court has struck down the government orders of giving promotions to SC/ST officials only on this ground, that the state government has not obtained the data about inadequate representation of SC/ST employees. So this exercise of collection of this data is so much vital, is so much important, that in the absence of this data, your entire workforce can suffer like anything. Jagesh sir, you might be knowing that many SC/ST officials have been retired in the same pay scale because of this thing. Yes. And surprisingly, means I find it very funny. I had filed an RTI with state government. Why this exercise of collecting the data was not taken by the state government? What they replied is that because the state government has filed an appeal in Supreme Court, because of this reason, they have filed an SLP in Supreme Court. They have not collected this data. Man, your Bombay High Court has struck down your government order of promotion because of the same reason, that you have not collected this data. Bombay High Court has said that because you have not collected this data, we are striking down your government orders. And the GAD department is saying that, okay, though Bombay High Court has struck down our GR, we are not going for that exercise, but we are going for appeal. Now, what Supreme Court is going to say is that, okay, आपको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप डाटा कलेक्ट करो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट में, आपने तो वो किया नहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट में चले आए. Supreme Court is again going to ask the same thing. Have you collected data? And what answer is there with the Maharashtra government? No. Maharashtra government is going to say no, they have not collected the data. Supreme Court is going to strike down, to dismiss that SLP on the same ground again. So this pre-requirement is very important, very vital, of collection of data, collection of statistics regarding the inadequate representation. This is the one prerequisite. Second prerequisite is that the state government, while making the provisions, or any government, any department, while effecting the promotions, they should ensure that the overall efficiency of the administration is not diluted, it is not adversely affected. While effecting the promotions, it should be
taken care that the overall efficiency of the administration is not adversely affected. Now, how can this be ensured? Means 22% SC/ST officials, if they are being promoted, can you say that they will be bringing an adverse impact on the remaining 80% of the workforce and prevent them from working efficiently? Silly. What sort of logic is Yeah. applied by Supreme Court? I don't know. Means this precondition is mandated by Supreme Court. You have to ensure this thing. Now, when, okay, let us say that this 20% people are not good performers. Let us assume that these 20% are, which are being promoted, they are not good performers. And if now they are being promoted, they themselves will not work. But what about the remaining 80% good performers? Yeah. They will be still performing good. Your overall efficiency in administration will still be maintained. This thing is required to be brought down on paper while making promotions. So what state governments or what central government organizations do, they specifically mention while effecting the promotions that all the APARs, that is your annual confidential reports, are being assessed. Their rankings are assessed. There is no adverse entry in the service books. Yeah. There is no remark of any of the supervising officer regarding the adverse performance of those officials who are being promoted. So these things are specifically required to be mentioned while effecting the promotion. If these things are mentioned, if these things are recorded, then it can be said that, okay, you are promoting those officials who are already efficient. So, man, you are not required to prove the efficiency of the open category people who are being promoted. But you are required to prove the efficiency of those from SC/ST who are being promoted. That is the era. That is the era of judiciary in which we are living. No one is going. Judiciary is not going to question the efficiency of the general category candidates. But it mandates. But the same Supreme Court will say that, okay, when it comes to SC/ST candidates, you bring on record all these things. So these are the two prerequisites which are required to be undertaken by effecting promotions. And if these two things are not done, your promotions are liable to be judicially quashed. And this thing is happening. This thing is happening all over India in many central government departments. Income tax department, this is being happening in state governments. Maharashtra is the perfect case. Anything related to promotions, judicial requirements are only these two, and that too they are very recent ones. Yeah. कोई क्वेश्चन है क्या ऑडियंस से रिगार्डिंग हाँ रिगार्डिंग रिजर्वेशन प्रमोशंस कुछ बात करनी है तो कह सकते हैं या सर पासिंग ऑन मेरिट हाँ बोलिए बोलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी there is one passing on the person from the over merit, they should be considered against the open category. Yes. Yes, सवाल this may please be elaborated. हाँ. Yes. Means this point, this was the basic point. This was the core point before the Supreme Court in the case of
Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan, but Supreme Court has not decided that matter yet. DOPT was clear. Yes, earlier it was very clear that SC/ST officials who are senior as per the general seniority list, and they are, if promoted, they will be treated from general category because they are being promoted on their own merit. So they will not be accounted from SC/ST quota, they will be accounted from open quota. This was the practice which was going on till 2016-17. But a case was filed that was again in the income tax department. That is the Jarnail Singh, the person Jarnail Singh is an income tax inspector. He is from Punjab. So Kiran. Yeah, go ahead. Hemant sir, go ahead. So Supreme Court in 2018, they have delivered a judgment on this case, but that matter they have not yet delivered the judgment. They have reserved the judgment on this particular matter, and it will be really means I am also keenly awaiting the judgment of the Supreme Court on this matter. In all the state governments also, the same practice is being followed. There an official, SC/ST official, who on his own merit, without going for any relaxation in the criteria, if he is being promoted on his own merit, he is accounted from the open category. But this practice was challenged in that Jarnail Singh case, and we are yet to hear from the Supreme Court on that matter. I am pursuing that case. I am keenly monitoring that case. Yeah. मनोज सुतारिया जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक बात ऐसा था कि अभी हमारे वहाँ 8 to 9 ग्रेड करके जो एक नया ग्रेड बनाया हुआ है, इसमें इन लोगों ने रिजर्वेशन निकाल ही दिया। इन्होंने कहा कि जो भी बंदे हैं ओपन जनरल, ये वर्कमैन का है, ये इनमें इनको डायरेक्ट ही इनका जिसका CR अच्छा होगा उनको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई भी इनके लिए मैं एक RLC में उसमें गया था, RLC ने बोला कि भाई इन्होंने जो किया हुआ है 8 to 9 ग्रेड, मैं बोला हमारा एक एग्रीमेंट था कि फाइनेंशियल मैटर जब भी होती है तो उसमें आपको प्रमोशन देना ही है। अब ये लोग अभी मना कर रहे हैं कि इसमें हम नहीं दे सकते, हमने नई ग्रेड बनाई है और वर्कमैन की है, तो कोई दूसरा कोई प्रोविजन है उसके लिए? कोई हम लोग ऑलरेडी नेशनल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी में डाला हुआ है मैटर, और बहुत दुर्भाग्यजनक है कि वो लोग भी कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसका कोई सॉल्यूशन लग रहा है? सर इसके लिए अलग से कोई रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए थे? हाँ जी, क्या इस पोस्ट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट और उसके रूल्स है हमारे? नहीं, उसके लिए क्या है, प्रमोशन के लिए ये ग्रेड ओनली प्रमोशन के लिए ही है। कोई रिक्रूटमेंट तो 4 ग्रेड में होता है, पर 8 to 9 नया ग्रेड बनाया कि भाई लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 8 ग्रेड में, पर इसमें से टोटली सिर्फ अपना रिजर्वेशन ही निकाल दिया, बाकी सब रखा। प्रमोशन के जो बेनिफिट मिलते हैं वो सभी बेनिफिट सबको दे रहे हैं, जैसे उसका इंक्रीमेंट मिलता है, उसके और बेनिफिट्स हॉस्पिटल्स के हैं, वो सब इंक्रीज कर दिया, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं। ओके, तो ये क्या हायर लेवल पोस्ट पे आती है क्या ये ग्रेड? नहीं, ये वर्कमैन में आती है। तो अगर ये हायर स्केल पर अगर नहीं है तो वहां पर कोई वजह नहीं बनती है। और रिक्रूटमेंट रूल्स सर इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स में ये बड़ा क्लियर हो तरह से करने वाले हैं। अगर प्रमोशन से ही ये फिलअप होने वाली है तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशंस रहते हैं। प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन उनको देना है अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट द क्लास 1 और ग्रुप ए पोस्ट। पर सर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नेशनल कमीशन भी हाथ अदर कर रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी हाथ अदर कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो एकदम फैक्ट है कि भाई आपको 8 to 9 ग्रेड
ये फाइनेंशियली मैटर मैंने 50 पॉइंट कोर्ट के डिसीजन भी रखे हुए हैं कि इन सब में है भाई हमारे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल गए हो? कैट में? मनोज जी आवाज आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सुतारिया जी वर्कमैन में इंक्लूड करना ही है, वर्कमैन में इंक्लूड करना ही है, तो भी ये लोग नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं और आगे? कोर्ट आपने लीगली इसको कैट में या कोर्ट में चैलेंज किया है? अभी मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी में डाला हुआ था, तो इन लोगों ने एक ऑपोज लिया था कि वो वन काइंड ऑफ हायर अथॉरिटी कमेटी है, तो इसके वजह से कोर्ट में उन्होंने वो रीजन दे के भाई इसका डिसीजन आने वाला है, ऐसा करके उन्होंने अभी रखा हुआ है पेंडिंग। मैंने कैट में डाला हुआ है। कैट में डाला हुआ? हाँ जी, हाँ। ओके ओके, आपने वो रिक्रूटमेंट रूल्स को चैलेंज किया है? हाँ जी, मैंने उनके जो प्रमोशन रूल्स जो नए बना है उसको मैंने चैलेंज किया है। ओके ओके, अच्छा किया, अच्छा किया। दैट इज व्हाट मैंने मेरे पास अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ मेरा मीटिंग था, तो भी मैंने उनको बताया, उनको भी पता चल गया कि ये फ्रॉड ही है, ये फ्रॉड है। पर अभी क्या है कि कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं, कौन चेयरमैन को उसको नाराज करे, ये करे। अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, और ये कमेटी भी फाइनेंशियल मैटर मांगती है, ये मांगती है, वो मांगती है, ऐसा कर दिया है। बहुत कोई अपना नेता ऐसा नहीं हो, राज रत्न साहब बोले बात सही है, सब एजेंट है। कोई हमारा मैटर लेके सही में इतना सारा अन्याय हो रहा है, लगभग 7 से 8 हजार आदमी को कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है कि भाई इवन नेशनल कमीशन इतना मुझे 5 साल से घुमा रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी मुझे 4 साल से घुमा रही है। नहीं, हम क्या करेंगे ना, लेट अस फोकस ऑन कैट। आप जो कैट पे आपने जो केस डाला है ना, उसके रिजल्ट के लिए आप फोकस करें। वो केस एक्सपेडाइटली डिस्पोज करने के लिए आप फोकस करें। पार्लियामेंट्री कमेटी पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए राइट नाउ। इट मे नॉट बी द राइट स्टेज टू ब्रिंग अप दिस मैटर बिफोर एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। let us go through all the legal remedies available. हो सकता है कैट से ही हमें वो रिलीफ मिल जाए। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, ओके या थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर। मनोज जी आपका नंबर भी चैट बॉक्स में शेयर करिए। जी 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 जी, है ना? कौन सी कंपनी बोली है इन्होंने, कौन सी कंपनी इंडियन है? ऑयल कॉर्पोरेशन में इंडियन ऑल ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन। एससी का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ हाँ ठीक इंडियन है। ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL। हाँ तो अच्छा, IOCL में। ओके ओके, वो मिस्टर खैरनार है ना वहाँ पे? हाँ, केन्नार जी है। वो आपके मतलब रीजनल प्रेसिडेंट है क्या वो? नहीं 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 नहीं, अभी हमने तो अभी जस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी से मैं गुजरात का जनरल का उसका दोनों का प्रेसिडेंट था। अभी नई कमेटी हमने बनाई हुई है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उन्होंने आदेश दिया उसके मुताबिक उसका जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ अभी। ओके 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 जी, ओके। आप नंबर शेयर करिए, हम BPCL से हैं, हम भी आपको इसमें मदद करेंगे। आप बड़ौदा से है ना? बड़ौदा से है ना? हाँ जी, बड़ौदा से। हाँ, ओके जी, ओके, थैंक यू। या ओके। We will be quickly going through the judgments of Supreme Court. एक हेमंत साहब ने अभी उसको रिवाइज किया है, जो CPR बुकलेट है ना, यस रिवाइज दैट, और उसमें कुछ नया चीजें इनकॉर्पोरेट किया है, उसको अपडेट किया हुआ है, तो उसका कॉपी भी शेयर कर दीजिए सर हेमंत साहब। हाँ चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, और सभी लोग जो है उसको अपने PC में डाउनलोड करके रख दीजिए। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारी नई चीजें हमको पता लगी है आज, बहुत, जो कैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन की बात कही है, वो कैसे हमको उसको लीगल वे में हमको उसको फाइट कर सकते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे। तो वो थोड़ा एक अच्छा व्यू पॉइंट है, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। वी हैव टू गो थ्रू लीगल मीन्स ओनली। सर मैं एक यानी यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी।
एक बार अगर हम डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में अगर करने में सफल हो गए, we can go for the same thing in judiciary also. Oh yes, everywhere. Everywhere. Yes. अच्छा, I have shared that CPR booklet. हाँ, ये CPR जो बुकलेट है ना, हेमंत सर ने यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर की हुई है. यू कैन डाउनलोड इट टू योर मशीन. और इसका मैं तो प्रिंट आउट लेके रख दिया हूँ, पुराना जो था उसका, बाकी अभी इसका भी ले लेना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव बुकलेट एज फार एज रिजर्वेशन, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स है उसमें, तो बहुत ही अच्छा कंपाइल किया हुआ है. बहुत मेहनत करी है हेमंत साहब ने, उनकी टीम ने. तो ये बड़ा काम का चीज है, वो शेयर कर रहे, तो उसको संभाल के रखिएगा. और आपके जो एसोसिएशन ऑफिस है या ऑफिस बेरर्स है, उसको भी एक एक कॉपी दीजिए, सो दैट कि दे कैन गो थ्रू इट. Yeah, go ahead. Sir, I have shared my screen. Is it visible? Oh yes, yeah. These are I have listed the judgments which have damaged the scope and applicability of the policy of reservation. The first judgment was in 1951, that of case was State of Madras versus Champakam Durai Rajan. Where this is very interesting that in the constitution itself there were no reservations given in educational institutions, but the Tamil Nadu government was giving reservations in medical and engineering college since 1921. So Supreme Court, what they have done is they have struck down that provision of, and it was actually not of reservation, it was that of proportional allocations of seats. What Tamil Nadu government was doing is that it was proportionally allotting seats to all the communities. As per their population, no? Right. It was proportionally allotting seats to all the communities. It was not a reservation. Yeah. It was proportional allocation, and Supreme Court struck down that order. Supreme Court struck down that order, and because of this judgment of Supreme Court, the Constitution was required to be amended, and Article 15(4) was required to be inserted. Acha, one thing I have missed regarding to Article 15 is that in the year 2006, Article 15(5) was inserted. There are specific provisions of reservations in private educational institutions were made. Can anyone share that why this amendment of Article 15(4), why this new article was required to be inserted in 2006? Is this screen visible of Article 15? Yes. Okay. उसको बड़ा कर दीजिए, एनलार्ज करिए उसको. Is it? No. That particular slide is not opened actually. Okay. ये पिछली बार भी इसमें प्रॉब्लम हुआ था, ये ओपन नहीं हो रहा था, कुछ देयर इज सम इश्यू, पता नहीं क्या है. हाँ, 15(4) क्या दिखाना नहीं चाहता हमको, क्या है? Okay. The point is, can anyone recollect why this Article 15(5) नया आर्टिकल 2006 में क्यों इंसर्ट करना पड़ा? और वहां पर it specially made provisions for reservation in private educational institutions, whether they are aided or unaided. Specific provisions of reservations in प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मैं आपको कह रहा था कि एलिमेंट ऑफ
reservation is already introduced in the private sector. It is this. Constitutionally, it is this Article 15(5). The provision of reservation in private educational institutions is made. So in the same principle, on the same principle, we can also claim our share in private employment. In 2006, this article was specially inserted for other backward classes, for OBC. In 2006, there was a law which was made by central government making provision for reservation to OBCs in higher education. एक काम कर लेता हूँ, ये जो आर्टिकल 15 है ना, उसका 5 है, 15(5), ओके, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या अमेंडमेंट है, वो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, ठीक है? वो स्लाइड ओपन नहीं हो रही है ना, इसलिए मैं आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. This is 15.5, okay. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes. हो रहा है, ओपन हो रहा है अभी? हाँ हाँ, हो तो रहा है. Of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions. जो अभी साहब ने बात करी उसके बारे में, ये private educational institution whether aided or unaided by the state, this is very important, other than the minority educational institution referred to in clause 1 of Article 30. Thank you, sir. Thank you. Yeah. इसका इम्पोर्टेंस, ये आर्टिकल 15(5) का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी आर्टिकल के थ्रू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन, एटलीस्ट यहाँ पर जो स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया है, स्पेशल प्रोविजन को प्राइवेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉन्स्टिट्यूशनली. We might be knowing that the OBC students were not provided with any reservations in higher education. Mandal Commission, the Mandal judgment was only for reservation in public services. That was not for reservation in higher education. Other backward classes got the right of reservation in educational institutions only in 2006. And the reason was this article. Through this article, even this article was also challenged in Supreme Court. Article 15(5) was also challenged in the Supreme Court, and Supreme Court gave a green signal. It accepted that it is constitutionally valid for the central government to enact this article and make such special provision. Particularly reservation in IITs, IIMs, and central universities for OBC. It is very surprising that till 2006 that other backward classes students were not given any promotions, any reservations in IITs, IIMs, and central universities, central educational institutions. It was only from 2006 that was made possible. So once again to our judgment. Yeah. Sir, Hemant sir. हाँ. ये बीट्स मतलब पिलानी में रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, इज इट करेक्ट? बीट्स पिलानी Birla Institute of Technology. Right. Okay, means I'm not aware. I'm really not aware. It is not applicable there. Acha. This is a news for me also. So under what clause or under what exemption they were given this suit? I don't know. Yeah. But they have 3 campuses. One is in Pilani, another is in Goa, and third is in Hyderabad.
It is under Birla Institute of Technology. It is one of the premier institute Right. of the rank of IITs. Right. And their reservation is not applicable. And it is surprising that no social organization has come forward or highlighted this point. Okay, sir. Let us collect data regarding this. The next judgment was in 1962. This is a very important judgment, and in context of OBC. Through this judgment in the case of M.R. Balaji versus State of Mysore, the 50% ceiling was introduced for the first time. ये हमें ऐसा लगता है कि 50% का सीलिंग ये मंडल जजमेंट ने लगाया है. 50% का सीलिंग जो है ये 1962 से एप्लीकेबल था. और सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी मच कीन अबाउट दिस सीलिंग सिंस 1960, and because of this judgment, the commission itself, at the time of submitting its report in 1980, the commission itself mentioned that because of this judgments of the Supreme Court, we are not able to recommend 52% reservation to OBC, and we have to restrict ourselves to 27%. The commission was talking about this judgment at that time. This judgment is still in effect. The next judgment was in 1967 in the case of C.A. Rajendran, where Supreme Court said that there will be no reservation in promotions within Group A post. And the reason for this judgment was that even before this judgment, the central government has made a policy of not providing any reservation in Group A post. Even before this judgment, and that policy was challenged. And Supreme Court said that, okay, because in the higher post, the judgments, the decisions are required to be taken for very, what we can say, in the national interest. In the national interest, the policy decisions are required to be taken, and while taking such a judgments, while making such a decisions, there should not be any dilution in the merit criteria. Again, yes. Again, the same thing was reiterated. Even at some point of time, I will be sharing all the PDF files of these judgments also. This judgment is still in effect. And also this was the beginning of the judgment of the interpretation, saying that reservation is not a fundamental right. The practice of interpreting Article 16(4) in such a way that it is a discretionary power. It is a discretionary power and not a fundamental right. It was this judgment which started interpreting in such a way. Then comes our 1992 Mandal judgment. In this Mandal judgment, 4 adverse judgments were also given. That is of introduction of creamy layer to OBC. Second is no reservation shall be there in super specialty courses, post institutions, and there shall be no reservations in promotion. Entirely no reservations in promotion. So you can see that the 3 judgments are still in effect. That is, reservation cannot exceed 50%, still in effect. Creamy layer is still in effect. There are no reservations in super specialty courses, post, this is still in effect. However, the judgment that there shall be no reservation in promotions, this judgment was nullified by the 77th Amendment in 1995, and the reservation in promotion to SC/ST were restored by this amendment. Section 4A.
Yeah, by inserting new article of 16.4a. But what was the blunder which was committed while framing this article 4a? Can anyone recollect? Which I had shared in the second webinar. There was one big mistake. OBC, OBC not mentioned. Backward classes not mentioned. OBC. Yes, yes. Instead of mentioning backward classes, the terms SC, ST were used. Yeah. So what has happened is that because of this article 1995, which was inserted in 1995, now the OBCs are constitutionally not eligible for promotion, and only SC, STs are constitutionally eligible for promotion. Before this amendment, before this article, before 1995, even OBCs were constitutionally eligible for promotion. Prior to this Mandal judgment, prior to 1992, OBCs were also constitutionally eligible for promotion. But after this Mandal judgment and after this article 16.4a now, OBCs cannot claim reservation in promotion. We have to specifically go for further amendment of this article 4a, suggesting of replacement of SC/ST words with backward class. Yeah. Then we had another judgment in 1996 in the case of Vinod Kumar here, where Supreme Court says that okay, you can give promotions, but you cannot relax the standards of evaluation while granting reservation in promotion. So this judgment was also nullified by inserting a new proviso in the same article 16.4a. A paragraph was introduced, and the specific wordings regarding grant of relaxation of standards, relaxation in evaluation was inserted. The same, see, this article 16.4a was amended twice in 2000 by two important wordings regarding relaxation in standards of evaluation and by inserting the component of consequential seniority. You might be aware of this thing called as consequential seniority. What happened is that when promotions were given to SC/ST officials, what Supreme Court said that, okay, you can promote SC/ST officials, they will be promoted, but when the next candidate will be promoted, he will be superior to you. Mm-hmm. That was the meaning. That was the meaning of the famous catch-up rule. SC/STs will be given promotion. Mm-hmm. Okay, they will be regaining their seniority also, but till which time? They will be considered senior. Means a junior engineer, he will be becoming assistant engineer, but he will be considered as junior engineer only till that period when the next candidate is not promoted as a junior engineer. So when the next candidate is promoted junior engineer, this SC/ST candidate will be losing his seniority. This was the scenario. Mm-hmm. This was the interpretation of Supreme Court. So through this amendment in 2000, both these things were specifically and categorically inserted in Article 4A. Consequential seniority was once again restored, and the relaxation in standards was also allowed. The next Sir, one question. Bolo. Sir, anywhere there is mention of public sector in this, in any judgments or in any articles, clear cut there is that in the, for reservation is in promotion is there in the central and state governments, but anywhere there is mention of public sector units, you have found anywhere in judgments or anywhere?
हेलो, लगता है उनका कनेक्टिविटी का इश्यू है। स्टेट में आ गया ना, उसका नाम क्या है? स्टेट लिखा ना? लिखा है, स्टेट लिखा है। आई वांट टू नो क्योंकि जब अभी जो पीएसयू का ऐसा स्पेसिफिक कहीं नाम नहीं है, स्टेट का नाम है वहां पर, स्टेट। ओएनजीसी इज अ स्टेट। ओके, या ये पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रहा है ना फॉलो? कहीं नहीं हो रहा। रिजर्वेशन प्रमोशन कहाँ है अभी? देयर इज नोवेयर इन इंडिया। वो तो ऑलरेडी बिल पेंडिंग है लोकसभा में ना, ऑलरेडी। जब 64A में जब ऑलरेडी है मेंशन, फिर भी उसका कहाँ इंटरप्रिटेशन हो रहा उल्टा पुल्टा। फिर पार्लियामेंट में वो गया, वो अभी वो पड़ा हुआ है उधर। उसके बारे में कोई वो फर्दर कोई उसका डेवलपमेंट नहीं है। एटलीस्ट कुछ स्टेट गवर्नमेंट या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ हो रहा है, पार्शियली भी हो रहा है, पर नॉट इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कहीं मेंशन है क्या जजमेंट का स्पेसिफिकली? तो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। नहीं, अभी उनको क्लैरिटी क्या है मालूम है? ऐसा एक्चुअली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे आर कंसिडर एज अ स्टेट। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। So because the state has a majority stake in the public sector or any enterprises where the state is having 51% stake, they are considered as a state. Now in PSUs, as per the Supreme Court judgment, the reservation is applicable only at a lower grade of grade A services up to grade A. So up to grade A in state government or central government is correspond to which grade in PSU that nobody knows. हाँ, ये भी बात सही है। तो ओएनजीसी में E5 है, मतलब हमारे यहाँ जो E4 अभी E4 हो गया है, मतलब उसको चीफ इंजीनियर हम लोग बोलते हैं। फ्रॉम चीफ इंजीनियर वो लोअर ग्रेड हो गया उसका ना, जैसे हम मानते हैं। उसके बाद वाला जो है उसमें देयर इज नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये है इशू। तो वो कौन से बेसिस पे हुआ वो कोई बोल नहीं पाता कि ऑन व्हाट बेसिस इट इज। नहीं, व्हाई ओनली चीफ मैनेजर, व्हाई नॉट डीजीएम, व्हाई नॉट जीएम, व्हाई नॉट सीजीएम? so that particular thing na, it's actually collectively na PSUs they themselves HR they have decided and they have taken some call on this ki up to this grade only they will give the reservation in promotion, भाई वहां after तक that they will not. E4 तक आपको प्रमोशन देने में उनको कोई तकलीफ नहीं ना, ये इशू है। वो तो उसके बाद वर्किंग में ग्रेड ही है। वर्किंग ग्रेड है। उसके बाद में फिर कॉर्पोरेट ग्रेड चालू होता है ना। अब हाँ, कॉर्पोरेट ग्रेड में फिर आप लोग ऊपर जाएंगे, E8 E7 E9 बनेंगे, फिर आप क्लेम करेंगे मेरे को डायरेक्टर बनना है। ये इशू है एक्चुअली इसके पीछे, See, I have to share something about this. ग्रुप ए, बोलिए। ग्रुप ए में रिजर्वेशन नहीं है। ग्रुप ए लोवेस्ट रैंक तक है, बट आगे जो है वो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन यानी कि if the SC/ST candidate is senior enough in the zone of consideration, then he should be considered for promotion. अच्छा, जेडोसी का ऐसा है कि कहीं वर्डिक कहीं रूलिंग है ऐसा? Yes. No, there is a order. There is a OM, government OM, DOPT. Right. DOPT का rule. This is not happening in many PSUs. Exactly. That is what I'm saying. I myself got promotion on this basis. I struggled a lot. I fought and I got promotion. वो एक केस हो सकता है, बाकी एक केस नहीं। अभी तो सबको खुला हो गया ना, एक हो गया तो अभी को तो सबको मिल रहा है। पीछे के जो है वो सब प्रमोट हो रहे हैं, एक ही नहीं है। It has become a unique case. So after that they are now following. नहीं, बीपीसीएल ने एक्चुअली ना बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जेडोसी वो जो डीओपीटी के ऑर्डर में एक केस एडमिट करने के लिए डाला था, लेकिन वो किसी कारणवश उस टाइम पे फॉलो अप नहीं किया गया। बट ये जेडोसी का उसमें मैटर था काफी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बीपीसीएल में जो है ना ये प्रमोशन वाज डिनाइड। तो I can अच्छा share this order to Somkor later on. आप इसमें डाल दीजिए ना, सबको मिलेगा। अभी फिलहाल में तो नहीं मिल पाएगी immediately, but I will share with you later on. ठीक। टूडू जी, आपके गेल में क्या हालचाल है? ये जेडोसी का जो गेल में भी नहीं है, जेडोसी का नहीं है अभी। महासेन जी से वो ले लीजिए ऑर्डर, हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये दे आर नॉट फॉलोइंग इट एक्चुअली इन ओएनजीसी आल्सो। आई एम सेइंग डॉक्टर साहब आ गए, ज्वाइन हो गए। हाँ, वो पेज ओपन नहीं हो रहा उनका कुछ। नहीं, डॉक्टर साहब आ गए ना। आ गए क्या? We have to fight, we have to point out. Unless we point out, they will not listen.
वो तो Yes, बात yes. you are very correct. We are fighting, but they are not listening. And for that we need to approach several agencies. I had approached several agencies, SCST Commission, Parliamentary Committee, Prime Minister's Office, and whatnot. Correct. Everywhere. Then there was a pressure from those agencies, and finally department bowed to their requests. Who is this? Who is this? Who is this sharing something? Sarita V. क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर हेमंत साहब आ गए ना लाइन पे? हाँ हेमंत साहब बोलिए। ये मुझे भी सर पता नहीं था कि PSU do not adopt a uniform promotion policy. That is correct. Means every PSU has its own rules regarding the promotion. Yes. Okay. वो भी है, मैनेजमेंट के विल के ऊपर भी है, वहाँ पे कौन बैठा है उसके ऊपर है, और जो एसोसिएशंस है वो कितना उसको परस्यू करता है उसके ऊपर भी है। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज। करेक्ट ये भी है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसोसिएशन किस तरह से लेती है। एग्जैक्टली। अभी देखिए बीपीसीएल में ऐसा है कि जितने भी SC/ST एसोसिएशन की रीजनल कमिटीज है या जो भी सेंट्रल कमिटी है उसमें ऑल नॉन मैनेजमेंट स्टाफ है 100%, एक दो छोड़ के, और एक दो छोड़ के मतलब वो A ग्रेड के ऑफिसर के होंगे। तो वो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ को ये जो मैनेजमेंट स्टाफ का जो प्रमोशन का इशू है ये उनको समझ में आता ही नहीं जल्दी, और वो बराबर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, और वो इतने पढ़ के भी नहीं जाते हैं ये सब जो है, और वो मैटर सिर्फ यही लेते हैं कि हमको 14 अप्रैल को इतना पैसा चाहिए और 6 दिसंबर को इतना पैसा चाहिए, बस उसके ऊपर बढ़ते नहीं आगे। तो प्रमोशन का मैटर समझ में आता नहीं, इसके लिए वो ऐसे ही सालों साल निकल जाते फिर। और एक बार प्रैक्टिस हो गई, एक बार कोई अगर पोस्ट भरी जाती है ना, एक बार प्रमोशन होने के बाद में फिर आप क्या झगड़ा करके उसको रिवर्स थोड़ी करोगे ना किसी को। तो ये सब ऐसा ये बीपीसीएल का ये मैटर होने की वजह से बीपीसीएल में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, गो अहेड। ओके, लेट अस मूव टू दी अनदर। नहीं हेमंत जी, इसके पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो 1962 का जो जजमेंट है और इंदिरा साहनी है मंडल, वो 50% का बात करता है, तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन देम? सर 1962 का जो जजमेंट था वो सिंगल जजमेंट का जजमेंट था। इट वाज नॉट मेड अ जुडिशियल लॉ। लेकिन मंडल कमीशन का जो जजमेंट था वो 9 जजेस का जजमेंट था, इसलिए वो एक जुडिशियल लॉ बन गया। ओके फाइन। ये है ओके। Like constitutional bench form हुआ था और then they have decided. करेक्ट। जिसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं थी वो भी बात कर लिया, ऐसा मतलब। हाँ यस, राइटली सर, राइट। नहीं, एक बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर अपने जजमेंट्स में ये कहा है कि जजेस शुड रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ to the point which is before them. सही। However, ऐसा होता गया कि जो मैटर्स उनके सामने लाए नहीं गए हैं, judges have extended their judgments even to those matters which are not even called for in the petition. In 2006, we had that famous Nagraj judgment, which mandated 3 preconditions: collection of data for backwardness, for inadequate representation and efficiency. इसमें से ये जो 3 कंडीशन थी, उसमें से पहली कंडीशन जो है टू प्रूव योर बैकवर्डनेस, ये कंडीशन अभी निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 2018 में जो जजमेंट आया था, इसमें से केवल 2 ही कंडीशन अपहेल्ड की। देयर इज नो नीड फॉर
proving the backwardness by the candidates again at the time of promotion. तो बैकवर्डनेस वाला, अभी सर एक मजे की बात देखिए, आपने आपके पोजीशन पर काम करते हुए अगर कोई गलती की तो आपके अगेंस्ट में आपकी कंपनी डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेगी, मेरे अगेंस्ट में मेरा ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करेगा अगर मैंने कुछ गलत काम किया। अभी मुझे ये एक बात बताइए, ये नागराज जजमेंट में उन जजेस ने 5 जजेस ने ये जो कंडीशन डाली थी कि बैकवर्डनेस के लिए भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये जो इनका गलत जजमेंट था इसके लिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं है। That is very true. Yeah. Means they can go scot free. कोई भी जज आकर किसी भी तरह इंटरप्रीट करके चला जाएगा और उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। और आफ्टर 20 years, 30 years, again some judge will say, okay, 30 years before that judgment was wrong. Simply. उसकी वजह से जो डैमेज हुआ, यानी नागराज केस के ये जजमेंट की वजह से 2006 से लेकर 2018 तक जो डैमेज हुए, व्हाट अबाउट दैट? वो कैसा प्रोविजन है नहीं ना, है क्या जजेस के अगेंस्ट उनके जो वर्डिक्स है उसको इसमें पेनलाइज करने का कुछ है ऐसा सिस्टम? I think parliament is competent to exactly पार्लियामेंट के पास है वो सारा make a law कि whenever a damaging judgment, wrong judgment is passed by any Supreme Court judge, उसके लिए ये पेनल्टी रहनी चाहिए। वो भी अभी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा whether it is really damaging in what sense। ये भी अलग इशू है। नहीं, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है गलत है। Yeah, that is true. At least in those cases where the higher number of judges have found that verdict to be wrong. So in 2016 we had another judgment which said that courts cannot issue any directions to any agency, to any government, to any state government, to any central government department for collection of quantifiable data. यानी just like in महाराष्ट्र में जैसे स्टेट गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट नहीं कर रही है तो नो डायरेक्शंस कैन बी सॉट फ्रॉम द कोर्ट। कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप वो क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करे ही करे। ये हैवी डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है, एंड दिस इज exactly what is happening in Maharashtra. Exactly. Maharashtra government is not collecting the data, and now you cannot request the courts also. सर इसी से रिलेटेड 2019 का जजमेंट था, दैट इज आई थिंक टिल नाउ 2020 का फरवरी 2020 का, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज the most damaging judgment till now in related to promotion. That is the last judgment in the case of Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. It says that even if there is inadequate representation of SC/STs, even if there is a data showing inadequacy of representation of SC/STs, still courts cannot give a direction to the government to give reservations. That was the specific case in उत्तराखंड में ये इतना पेक्यूलियर केस था कि वहां पर ऑलरेडी एक कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST. The commission collected that data, and as per the statistics, it was revealed that there was really inadequate representation of SC/STs, but still state government was not providing reservation. Still state government was not providing reservation, and Supreme Court said that we cannot do anything. We cannot do anything even if there is a data which reveals the inadequacy of representation of SC/STs, but if state government takes a decision
of not giving reservation in promotions, then Supreme Court cannot direct them to give reservation. अपनी मर्जी से करते रहो. अभी अभी फिर इसका मतलब ये है कि if there is zero representation of SC/STs or state government is not taking any action to provide reservation, in that situation also you cannot approach Supreme Court. Yeah. This is the most damaging judgment regarding reservation in promotion to. ये अभी भी इफेक्ट में है. This is not yet nullified. This judgment is still in effect. ये बेंच का है क्या कि किसी के सिंगल का है? नहीं सर, I think it is two judgments. अच्छा. ये लार्जर बेंच के लिए रेफर कर सकते हैं. हाँ वही कर सकते और क्या कर सकते, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. This means Supreme Court is unable to defend the Constitution. Now, yes, that is what I was saying, that discussing on judgments of Supreme Court means we are cutting the weed, we are cutting the grass. We are not changing the ground. सही. Changing the ground means securing a representation in judiciary. So these were the 11 judgments regarding the damaging effects on the various on the applicability and scope of reservation policy. Sir, should we continue? 5 बजे तक. हाँ नहीं, अभी वाइंड अप कर दीजिए अभी इसमें सम करके ना, पूरा सम अप करके. That's all. Fine. Please go ahead. Let us conclude. या उसमें और कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि बहुत सारे तो अभी डिस्कशन में आ गए सारे ऑलमोस्ट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, फिर एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेमंत जी से, वो कंक्लूड करेंगे. क्योंकि एजेंडा के हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए ना, एजेंडा आपके सामने. नहीं, वो उनके पास ही था, उन्होंने एज पर उनका जो ये था ना पॉइंट्स, वही लिया उन्होंने. ठीक है, ऑलमोस्ट कवर कर दिए ना, कवर हो गया, क्योंकि उसमें जो कोर्ट वर्डिंग्स वगैरह ये सब था, है ना. ये देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया, वेज टू सिक्योर भी हो गया, स्टेटस ये हो गया, सीपीआर का सेंटर, ये तो पता है. डिमांड फॉर एप्लीकेशन प्रिविलेज रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन ये है. तो इसमें से हो गए सभी सारे हो गए ऑलमोस्ट. तो इसमें से अगर किसी का कोई सवाल और है तो एक हाथ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेमंत जी से कि सम अप करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे, मतलब उसको कंक्लूड करेंगे. Sir, I have ended from my side. अच्छा. Means if we are not continuing, then we will not go ahead, because rest of the topics will consume more time. अच्छा. So let us conclude here itself. नहीं, एक हेलो सवाल आया है किसी का, इसे रुकिए जरा एक मिनट. कोई हेलो. हाँ, या गो अहेड सर. डॉक्टर हेमंत सर ने कहा कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, especially private educational institutions. But Article 15.4 and 15.5 ensures about the admission in private educational institutions, but not in recruitment. So I don't think that until and unless the government is being aiding to the educational institutions, the reservations are not being followed. If they are not taking any help from the government, any aid from the government, private institutions are not bound to implement the reservation. It is under the Article 15.4 and 5. It is just for the admissions. If they are not paying, if they are not employees are not being paid by the government, then they are not bound to implement the reservation policy. In that case, what we should do? Or I don't think they are being implemented if they are not being paid by the government. Sir, right now most of the government sir, the word private is not in that sense. It is just they are governing. But if the institution is funded by government, but the institute is private, it can be private, but it is just for the management, not for all the rules regulations. It is private word is in different way, not as a PSU. Absolutely right. The special measures are only limited to the admissions of students. Yes. They are not extended to the recruitment of faculties in that educational institution. Yes. So that is what
the same stand we can say that already the principle of reservation has been applied to the private sector in the educational area. So, at least for the admission. It is being implemented at least for the admission. Oh, yes. Exactly. So by taking the clue from the same article, we can demand for reservation in recruitment also in private sector, financially assisted institution. Yeah. Okay, sir. On the same ground. Okay. ठीक है ना? Yes. आपलं नाव काय आहे? काय वंजार वाडकर. वंजार वाडकर कुठून बोलताय? औरंगाबाद, महाराष्ट्र. और तुम्ही नंबर शेअर करा नाही ते, ठीक आहे? Yes, sir. नाव आणि नंबर शेअर करा. अच्छा, नेक्स्ट लास्ट I think last Sarita V. Yeah, go ahead. Unmute yourself and then go. Hello sir, Jai Bhim, everybody. Jai Bhim. हाँ, बोलिए. This is regarding the last point. We would like to suggest is we have to demand reservations in private sector also. If the private firms, factories or industries are enjoying the benefits of low cost land, like subsidies, like incentives, like low power tariff, then in those cases, like what Uttar Pradesh, Mayawati Chief Minister has done, has given nearly 30% reservations in private sector. Wherever there are private and public-private partnership was there. Number one. Number two, recently, when Kamalnath was the Chief Minister of Madhya Pradesh some few months back, he has introduced a new middle and small scale enterprise policy, wherein there is a 75% reservation for SC/ST, where the firms are enjoying the benefits of land, current, subsidy and incentive. So similarly, we should make this a national issue and everybody should strive for the same. Right. Correct, yeah. बोलिए हेमंत सर, कुछ बोलना है? Completely agree. हाँ, that is very true. उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती. Yeah, there should not be any second thought on this. Yeah. आपका आपका नाम क्या है? सविता लिखा है, सरिता. Actually, I am Ravi Shankar. अच्छा, okay. Deputy Executive Engineer in Andhra Pradesh. Mr. Ravi Shankar, can you share your mobile number also in the chat box? Everybody who have joined first time, they are requested to share their name, their organization, and their mobile number, so that we'll be in touch in future also. Because because we'll be organizing so many seminars, good seminars on the subject of importance for our community or employees. This was one of this program. No, so Hemant sir was really kind enough to spare his time. Three. This was third program. No, and अभी हेमंत सर, आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग अभी और कुछ आपके साइड से कुछ बचा है? ऐसा लगता है आपको कुछ कि नहीं, ये भी कवर होना चाहिए? और नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ. जो आपका जो जितना भी टॉपिक था अभी तक का, इस पर CPR जो है ना, आपने जो बुकलेट जो बनाया है, तो हाँ, उसमें से कुछ ऐसा some topics are yet to be covered. Need to be covered. Okay. So क्या एक सेशन फिर बाद में हम लोग कभी करें, ऑर्गेनाइज करें? Sir, as per the availability of participants. Okay. Participants आप बताइए. और एक हम चाहते हैं कि हेमंत सर से और एक सेशन हम कराएं. आप लोग रेडी है उसके लिए? Yes, sir. Are you ready? Yes, one should be ready. आप लोग स्पीक आउट समथिंग. नो, ऐसा नहीं चलेगा. बस म्यूट करके बोलिए जरा. सर एक बात बताता हूँ. हाँ जी. उसमें आपने जो बताया था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/STs. हाँ जी. So उस पर डिटेल इश्यू होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए. Because in Andhra it is being discussed many times that there should be subcategorization in SCs. Okay. Because there are Madiga and Mala. There are two different. Yes, all these are demanding that there should be categorization. Very nice, very nice. Supreme Court has already struck down that. So whether it is wrong or right, whether it is beneficial or not, yes, that's right. That must be discussed. ठीक है. Okay. और कुछ और अपना सजेशन दीजिए. आप लोग बोलिए ना. You just come out. And one more thing, sir.
Sir, one more thing, sir. I'm Ravi Shankar. Today we have conducted one roundtable conference with all the SC, ST and BC employees of Anantapur district of Andhra Pradesh, demanding for reservations in new education policy. The present education policy, which is going to get approval from Parliament very soon, and got already Union Cabinet approval. So there is no word, single word about reservations to SC, ST, BCs. Yeah, so it is today not we there. conducted Yeah. one roundtable session, and we have demanded, as per Article 15(1) and 16(1), the state should compulsorily go for reservations for SC, ST, BCs, including higher education. Yeah. नहीं, एनईपी में तो कुछ है नहीं ना. देयर इज नो आई मीन रेफरेंस ऑफ एनी रिजर्वेशन वर्ड ही नहीं है सुना है. या यस एनीवे ठीक है. और कुछ एनी मोर सजेशंस प्लीज ऑन दिस टॉपिक रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि इसमें बस सुतारिया जी है, वो आईओसी के है, बबलूमंडी जी बीपीसीएल वाले हैं, हमारे रघुनाथ कागड़कर जी, माई सेल्फ, सुनील, देन विपुल, दे आर फ्रॉम ओएनजीसी साइड, और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, गेल के टूडू जी है, हाँ, और भी बाकी लोग हैं, भाग्य साहब भी है हमारे ओएनजीसी से, और भी वो काफ़ी लोग हैं. सो लेट अस हैव अ ओपन डिस्कशन. नो, तो एक सेशन हम उसके लिए रखते हैं, जो शुरू में हम लोग 1 घंटा जो सब कैटेगराइजेशन है और बाकी जो इशू है उसके लिए हम लोग देंगे, ठीक है. और बाद में जैसे कुछ और भी कुछ पूछना है, हाउ टू गो अबाउट इट. सी, ये प्रोग्राम सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए ही नहीं है. जब इंफॉर्मेशन मिल गया और वो वहाँ खत्म हो गया, कहानी वहाँ तक नहीं है. नाउ व्हाट इज वे फॉरवर्ड, आगे भी इसको कैसे अमल में लाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना जरूरी है ना. We can chalk out the next. वो तो होना चाहिए. तो भाई इसमें तो लेट अस हैव ओपन डिस्कशन ऑन दैट, और हम लोग साथ में बैठ के ये करेंगे कि नहीं, हमको ऐसा अभी करना पड़ेगा सभी लोग मिलके, कि नहीं, दिस इज द वे, नाउ वी हैव टू गो अहेड विद. ये मैं बोल रहा हूँ, सही है ना. मैं कुछ बोलूँ क्या सोमकुमार जी? हाँ बोलिए बोलिए. यस यस बोलिए ना, बोलिए. ये आज का बहुत ही अच्छा सेशन है. इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बताया कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमको अभी फोकस करना चाहिए. जो उन्होंने बताया कि बी राइट. क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी? हर ऑफिसेस में इसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन दिस एजेंडा एंड मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड. एग्जैक्टली, यस. तो शायद इससे कुछ नया रास्ता निकल आएगा. नहीं, हेमंत साहब ने मुझे जो लगता है करेक्ट है. आपने हेमंत साहब ने पहले ही सुना ना कि ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ हम लोग सुन लेंगे और बाद में फिर भूल जाएंगे, इसके लिए नहीं है ना. देयर शुड बी सम कॉन्क्रीट स्टेप. हमको कुछ करना है, कि कैसे करना है, लीगल वे में हमको जाना है, कैसे जाना है, उसके बारे में बात होना जरूरी है. अभी इसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पे. हमारे पास में पेट्रोलियम फेडरेशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ. तो वी कैन यूटिलाइज दैट फोरम. नो, पेट्रोलियम फेडरेशन जो है उसमें आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और बाकी जितने भी पीएसयू है, दे कैन ज्वाइन विद अस. नो, और हम लोग उसको एक आधा अच्छा लॉयर करके उसका स्टडी करके हम लोग वी कैन फाइल रिट इन द सुप्रीम कोर्ट, और जो भी उसको करना है हमको फर्दर जो भी एक्शन लेना है. हेमंत सर भी वहाँ रहेंगे, हम ही इज ऑलवेज देयर विद अस. और भी बाकी जो लॉयर्स है जो बड़े हैं महाराष्ट्र में, जिनका नाम है, जिनका स्टडी है, हाँ, तो उनको भी हम लोग साथ में लेके आएंगे. वो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल. मतलब इसमें से initiate all the initiate action on all the points, finer points expressed by the speaker here. Yeah, correct. Not one by one, simultaneously on all points. We have to initiate action. क्या करना है वो नेक्स्ट सेशन में डिसाइड करेंगे. वही मैं बोल रहा हूँ. हाँ, एक एक करके नहीं, ऑल करने का है. मतलब एक एक नहीं, ऑल मतलब क्या हुआ, क्या मीनिंग है? नहीं, मतलब ये जैसे बोल रहे हैं कि वो खाली 15 इसके ऊपर नहीं, जितने भी लूप होल्स बताए, फाइनर पॉइंट्स बताए, उसमें एक एक करके सब में एक्शन लेना चाहिए. Like means what was being discussed right from the first webinar regarding that certificate for social justice, right from that thing to the we will chalk out the action program. अच्छा, ओके, ये बोल रहे हैं. ओके, नाउ आई गॉट योर पॉइंट. ठीक है. तो
So one more program will be there next week. ठीक है, हम लोग प्लान करेंगे, उनसे बात करके हेमंत जी से सैटरडे करेंगे या संडे करेंगे, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को हम लोग फिर शेयर करेंगे। हेमंत सर, डॉक्टर डोके ने बात किया क्या आपसे? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही मैं बताया था उनको। ठीक है, वो इश्यू हो गया, you. रिजल्व हो गया वो इश्यू, वो क्लैरिटी आ गई उसमें ना। हाँ सर, उन्होंने जो सेंट्रल का जो फॉर्मेट था जी, वो बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया। पहले का स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपडेटेड नहीं थी। ओके, 80s तक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 90 की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जिक्र नहीं था कास्ट सर्टिफिकेट में। दैट वाज द रीजन इट वाज रिजेक्टेड। करेक्ट, ठीक है। नहीं और इंडिविजुअल किसी को, हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो they can send a message to Dr. Hemant also. He has shared his number in the chat box. You can note down his number. He has also shared the 855-483-7268. I'll also share my number if you want to get in touch with me regarding anything. I'll write my name. I'm Jagesh Somkuar, and my mobile number is 9435717290. This is my contact number. Okay, ONGC 9435717290. So you can contact us. You can contact Dr. Hemant Tirpude or anybody from the audience. Or let us have open discussion. Let us do something concrete. Okay, हम लोग फिर सिर्फ बातें करते रहेंगे और कुछ होगा नहीं तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, राइट? सो लेट अस होप कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग विल बी डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द एम्प्लॉइज, राइट? Okay, now I request our secretary, Mr. Raghunath Kargakar ji, to propose vote of thanks. Yeah. Sir, एक request है sir. Go ahead, Raghunath ji. Okay. Well, thanks a lot to Dr. Hemant Tirpude. He has given in elaboration and in depth our concerns. What are our concerns in the policy, focusing on the constitutional policy of reservation. And as it has been very well complemented with the real data by Mr. Anil Medeji, and we are facing in present time the crisis. A lot of ideas also came, and it is good idea that we need to act aggressively on this topic. And Dr. Hemant has suggested the various ways of doing it, and we shall be continuing this march, this agenda, or let us say the movement for our right. I express my thank on behalf of the association, and rather on behalf of all the Petroleum Employees Association, because federation is, most of the members of federations are also available here, and we shall be striving for the justice. Thank you very much, Hemant sir. And I would like to thank to the guests from different, especially from the remote places, from south, even from western and north. Thank you very much. Over to you. Okay, thank you. आप लोग देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जितने हमारे पास प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग लास्ट 2 सेशंस ऑफ हेमंत सर एंड आल्सो टुडे सेशन, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको यूट्यूब में हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आज का, इसके पहले का तो हो चुका है। यू कैन ब्राउज यूट्यूब चैनल, यू कैन जस्ट टाइप सेवा ONGC मुंबई, सेवा SEWA, सेवा ONGC Mumbai in the search box of YouTube. So then you will get that channel. Then you can see all the past program videos, right? Okay. इसमें I have already shared this information in the chat box. Seva ONGC Mumbai. So you can watch all the past programs and also 2 programs, 2 sessions of Dr. Hemant Tirpude. ठीक है? Okay. Thank you, Hemant.
Okay, thank you, sir. Yes, thank you very much once again, everybody. And Thank you. that's all for today. And Thank you everybody. from Thank you everybody, हेमंत हम लोग सर, हेमंत सर का बड़ा धन्यवाद अदा करते हैं धन्यवाद करते हैं। कि उन्होंने इतने हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें, नई नई बातें डाली है, और वो नेक्स्ट सेशन में उसका कुछ फ्रूट हमको मिलेगा। लेट अस होप दैट। ओके, बाय बाय।